Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye.
lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye.
and gentlemen, welcome back to the Battle of Ancients Season 1. And today we are heading into the quarterfinals of this tournament. And the first match is with TKY Esports versus Crown Valkyries. Okay, the Valkyries will be facing up the TKY in the quarterfinals. Only one team will be heading into the semi-finals, and maybe we can find these two teams. One of the two teams will be crowned as the champion of the Battle of Ancients Season 1. Let's see what happened in the casting deck. It's your boy STZ. And in the draft phase, I can see that so many bans have already been done and so many picks have already been done by both of the teams. As we can see, the Suyu and Sicilian got picked by Team TK Bhai from the side of Red. That is your Crown Valkyries. They're going with the Gatotkacha and a Matilda. Okay, maybe we're gonna see a Alpha Matilda combo from the side of Red. But right now, a Phobius will be heading into the draft from the side of Team Blue. That's your team. Obviously, I mean TK Bhai. And look at that. The draft phase is cooking up right now. We can see the Badang, the Jushin, and the Lucas has been taken out from the draft, as well as the Julian, Fanny, CC will not be used in this match because TK Bhai will be taking them out as well. Right now, the last pick. Will we gonna see a Alpha Matilda combo, or there should be? I mean, there may be some other picks we're gonna see right now. Let's see what happen. I mean, okay, they're showing that this Irithel in the panel, guys. Do you know this trilogy is going on since month, we can say, not a month, since a season, we can say, because it's a trilogy. It's a love triangle between the Harith, Granger, and Irithel. If you guys are using one of these three MMs, then guys, I'm damn sure you are in the mythical immortal, maybe, because these three MMs are cooking up the gold lane. You all know that the game of a gold laner is the most important game in the match, because it first the early to mid game is carried by the hyper, the jungler, but the late to mid to late game is always carried by the goal laner. So that's why told you that maybe you guys will be in the immortal. But right now, please see this draft. We can see from here that the high loss will be taken out, and as well. Oh my goodness! Obviously, they have done their homework. TK Bhai Esports, as they straight go went for the ban of Alpha because there is a Matilda in the draft in the opponent side, in the side of Crown Valkyries. No need of Alpha to be combo with that Matilda because it's a troublesome thing. You will be found in if there is a Alpha Matilda combo, a very old combo still used by so many players and very effective combo actually works in each and every draft. So you need to take out one of the two heroes if you don't want to face any trouble in the match. Right now, heading into the second banning phase, and the last ban coming from the Crown Valkyries is a Harith. The love triangle will be stopped now because Granger is open, but the Harith, the counter of the Irithel, will be taken out from the draft. As well as we can see from the side of Team TK Bhai, they're going for the Eve ban, a nice ban. We can see after so many days, I'm seeing an Eve ban because we all know that Eve is a great long range mage, and in the mid lane, she's having that potential. She's having that CC which she can provide to the team and can make the gameplay lingering or hindering for the opponent side. So they literally went for that and they just took out it. No more hinder from the CC. I mean from the Eve, from this crowd controlling mage. And having a AOE is always effective, guys. I mean, therefore I say if you have a chance to pick up some mages, don't go for a Julian. Don't go for a non AOE hero, burst poke hero. Go for a AOE. I mean, at least one AOE in the three from the three skills. You will be cooking up the match. Like now, we can see that the two picks coming from the TK Bhai will be a MM and a Roma. What it will be? Will it be a Jawhead? They're showing in the panel right now, but I'm not sure about it. If there will be a Jawhead, then it will be a big problem for the backliners of Team Crown Valkyrie. They are going with the Jawhead right now with the Beatrix to be in the goal lane against Irithel. So guys, do you know that Irithel is in the trilogy meta, which I was talking about, but the Beatrix is a winning lane hero. Beatrix has no counters. Beatrix can play against any heroes. You can say that I had countered this Beatrix with a Moscow. Guys, if you have a comfort hero, you can counter anybody. You can even counter the counter of that comfort hero.
So that's the other thing. But if you're gonna see naturally, a Beatrix is a winning lane hero. She doesn't have I mean, so much counters in the goal lane. She can manage in any meta. Even she is nerfed, she can manage too. That's the things they're going for the Beatrix right now, and from the side of Crown Valkyries with the utility jungler, with the sustainable jungler, they're going with the Martis with the Matilda. I mean, there will be so much mobility in the Martis Mortal Coil, but still, you're gonna find some escape ability and some help coming from the Matilda's Gliding Wind as well and the Louis. So diversion play will be taken into consideration in this quarterfinals match between TK Bhai versus Team Crown Valkyries. Let's head into the match right now, and both the lineups are looking too good. So I don't have any co-caster today with me. So I'm asking you guys, whom And do you Dhappa, prefer? and Dhappa, it's me. As Dhappa, did you didn't see me in the Discord? Dhappa, I was Oh just my waiting goodness. for saying Dhappa. I don't know that you are here, but the hide and seek play has already gone very nicely, and now I am literally got that dhappa from Burger. The Burger is here, guys. The Burger lineup is too good. We are heading into the match. We are already into the land of dawn. This is the match between TK Yeah. Bhai versus Crown Valkyries. Whom do you think gonna win this match? Already taken up the buffs. I mean, if we look at the composition right now, it's TKY into the red side, if I'm not wrong. Yeah. No. TK Bhai I is in mean, the blue side. and okay, blue side. So I do see a lot of late game potential because they do have the Sicilian, right, and then Yeah. you also have the Joe to showcase the ejector play. But then on the opposing side, you also do have the Lue with the diversion. So you can't really expect. I guess it's about the rotation and the map awareness from both of the sides. But here can we can see already. I mean, so you with his fast rotation, he already cleared out one of the mini buffs from Martis. So I guess he is trying to create as much as disadvantage from the early game itself. So what do you Yeah. think about this? I mean, this is the way you should play, but look at that reaction coming from the Louis. A lot of damage literally onto that Sicilian. Right now, he's at the 7 of HP. Will be using his region forcibly and will be going back to a safer zone. But we can see there is a possible gank onto the EXP lane. A very nice rotation coming from the Martis, clearing up the objectives and then going for the turtle lane. And look at that. Oh my goodness, the pull coming from the Jawhead. He literally threw it out, but right now the Mortal Color can use the charge coming from the Suyu right now, giving so much damage. The Indian reaction onto the play right now, and the retribution will also being vested down before the turtle dance come up. I mean, at the situation as well looked upon, I mean, they do need to be scared of the damage from Soyu. The output is really high. But then, to counter that damage, you also have an Lui on their side. But by this, Density has cleared out the turtle for his team. And I guess this, I mean, neutral objective would create a lot of difference into the map because, I mean, it's not about the goal, big goal difference from the starting. It's the mini, goal differences which you Yeah. create step by step, and I guess this will create a lot of impact. But anyways, if we look in the map right now, I guess Beatrix is doing a fine job, cutting out lane as well as clearing out for some extra gold. I guess this would help in a laning phase. Yeah, obviously, as you mentioned that brick, that mini goal thing. Okay. The fight is on. The circling eagle will be strike onto that. I mean, beautifully onto that Beatrix at a 7 of HP. She will be managing to escaping back, and right now I'm coming to that mini goal part. I mean, you cannot build a mansion on one day. You have to do it. Yeah, I mean, it will take time. So for that, you have to brick by need to brick. make the pace. But right now, the pace will be tormented by the Martis. A first blood will be claimed by the Martis onto the Jawhead, and the fight is on onto the goal lane side. We can see the Fovius has been rotated down to the bot lane, but there will be no fatalities more because a kill will be secured down by the. Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's If so we talk about this, Martes, yes, indeed, is a really good early game hero. But as we saw in the previous fight, how Louis gave the damage, and with Martes' ulti, which is decimation, he had secured the kill for himself. And I mean, if he secures some more kills and stacks up his Sky Piercer, I mean, it would be a lot helpful to finish out. Because I mean, late game Phobius as well as Jawhead, as he's building his team, would be a lot tanky to go with. But anyways, I can see another tension building up in the turtle. Thing is, right now we're heading into the match again, and the turtle dance is going up here. At a sliver of Yeah. HP, the turtle will be secured by this Suyu, and the fight is on over there. The circling eagle and the Louis will be diminished, and with that, Jawhead will be taken to the heaven, and Mortis will not be spared by the Sicilians. The bat impact and the sanguine claws onto the point, Mortis onto the heaven. And I mean, that was a really great team fight though. But our sneaky Irithel would be just pushing out her lane because I mean, why not to take advantage of the rotation from the opponent? I mean, and meanwhile, as well as they will get the mid lane in a better. But so you also getting a lane for himself, and I mean, if we see now, looking at the itemization, Beatrix already has a malefic gun. So I mean, she would be having a range with her rocket launchers, but then you also have the Erythale with the sprint. So I think if it comes to the close combat, Yep. I guess Erythale would be having a upper hand. Sure, sure. I mean, this is the thing, guys. This is not rank. You should give a Yeah. rotation. You should take part in the fight. You cannot just take up some turrets and you thinking that you're gonna win this match because look at the Beatrix. You were talking about Yeah. Burger. Right now, I'm also Yeah. talking about it. The Beatrix is giving the rotation from the beginning to the end. I mean, not the till now we don't have the end, but in towards the mid game, she's still giving the rotation. Okay, some of missed. The charge coming from this two you also missed down, but they will be no fights right now. But from the bush, it will be a surprise attack coming from the Crown Valkyries. Look at the bad impact. The bad fist is on over there. The fight is coming from both these sides. But right now, Crown Valkyries are going behind. And look at that Suyu, the charge over there at the AOG connecting out of the four people. And at 7 of HP, Suyu managed to escape back. But right now, the Phobius is not going back. He's trying to take on the map. But in the push again, a hide and seek play coming from the Suyu will be managed to come back into a safer zone. No fatalities yet. A big fight, a more turning event. So many resources wasted. But there will be no kills for both these sides, and the score will be 7-2 with the two turtles onto the hand of TK Bhai. I mean, TK by doing a really fine job at cornering out and cutting out the lane, but then they also can't really, charge in as the Mortal Coil, and you do have the Gatukkacha for the stunts. So I mean, there would be an immense Look, defensive line, but anyways, team fight is breaking in. yep. The turtle will be secured down, and again the fight is on the right now. The Phobius looking up the map, and Matilda will be getting down with a Katolkacha going to the heaven, and they will be retreating back to a safer zone at a seg. Oh my goodness, at a 7 of HP. The snipe will be taken out. The Erythal skill and a mega kill will be secured by the Suyu. The Indian sniper, the Beatrix, will be taking down that Erythal with one shot. I mean, that's the thing. That's the beauty of Beatrix. I mean, you have her throughout every meta. She is all over the meta every time, and that's just because of the various guns she carries with along herself. And I mean, every gun is good at different situation, but it's just not about her. It's also Cecilion, pulling his sanguine claws and putting up some good control into the team fights, as well as Phobius taking in the lead with the jawhead, and the ejector play is obviously you can't forget that.
But Yep. anyways, if we look, the Matilda could do a really great thing. She has more potential, and to be, just not forgetting to mention, we can't see much diversion plays in this match. Yep. And look at that. The Bush and the Jawhead will be finding a attacking way, but right now, at a saver of HP, at a half of HP, Phobius has to retreat back. You don't want to take on to them and don't want to waste some goal over there, but the turret will be secured by the Beatrix right now in the bot lane. The fight is on the Suckling Eagle, and the AOG Beatrix life will be in danger. She will be tormented down, as well as the in reaction coming from the Louis right now. Even though the Suyu is there, the mobility will be used. He will be fine. He will be getting into a separate track, into a separate zone, but the diversion play into the action right now at a sever of HP with the flicker coming from the Jawhead will be taking him into a separate zone, as well as the Lord is here into the land of Dawn. Burger, three turtle into the hand of TK Bhai. So many turrets, I mean, five turrets into the hand of TK Bhai. Will they be taking this Lord into their hand, or we're gonna see a contest? We can see a contest because it's just a luminous lord, and if we talk about the goal lead, it's kind of pretty much high, but still, it's kind of would be an easy task because they do have a Melissa onto their side. But then, you can't deny the Jawhead. But meanwhile, Beatrix would be securing the Lord for her team. Easy lot for the TK Yeah. Bhai Esports. There will be a easy peasy lot, and they will be coming with this elemental lot soon into the map, soon into the action. But the thing is, will team Crown Valkyries can defend it? I mean, they have a goal deficit, uh, 8k goal deficit right now. We can say. I mean, they don't have that spike into their hand. The item bills, the itemization, you can see so much differences are coming. Burger, can you explain the itemization? If we look at the items, it's almost, kind of rehearsed. And Erithel does has, her core items, but then you also do have, the Beatrix with the BOD as well as the C Halberd. So, she will be Yep. canceling out the healing effect. But then, the Lord has been charged in, charging in from the top lane would be getting easily defended though. But I Yeah. guess they will get the bot lane inhibitor turret. I mean, only one HP to the bot lane inhibitor. Three blazings has been on. Right now, we can see the minions are going on to the top lane inhibitor, but the Batfist is on. The fight is on AOG right now onto the three people. The match is on My from both these God. sides right now. The flicker play coming from both these sides for the rescue. The Phobius into a very bad positioning will be shut down by a decimation coming from the Martyrs. One man down, one for non-trade, but two turrets will be taken down in the meantime with the Lord play. They got three turns actually, if we take in count of the second tier. But then, anyways, that was a really nice defend, and I would say a really wholesome combo. Because at the same time, Matilda with her circling eagle popped up, as well as AOG was on the spot connecting five people. But then, they were not able to make much economy out of that fight because they were, as you mentioned, really goal deficit 8k. I guess it's okay. Yeah, yeah. Okay, yeah, it's 8k goal lead Currently, it's against 9k. the opponent. So yeah, now it's 9k. So I guess okay, Martis is being chased. Yeah, I mean, you cannot chase a Martyrs, but as we are talking about when the match was a little bit in Yeah, trouble in the due to production unit, but it's then got good. I was talking about that if Martyrs not getting the early snowball is useless in the late game. I mean, if you have a Martyrs in your team, the first 10 minutes is crucial for you. I mean, you're gonna take kills in that first 10 minutes, then your Martyrs will be well and good because he is an early game jungler. He has that potential to take on yeah. kills, to give a raw damage, true damage we can say, to the opponent side within the 10 minutes. But after the 10 minutes, the play is stopped. If he's not having that snowball, he can't do anything. And this is what happening right now. He doesn't have the snowball, but the diversion maybe occur right now. The diversion play. Let's see how the diversion works right now. I mean, they particularly. I mean.
thinking about that diversion play, but look at that Gatotkacha right now giving a Joan and the diversion play into the action right now. The Lord is there. The Sicilian will be tormented down. Double kill for the Eritalta. He will be taking a triple kill. I'm smelling a maniac. I'm smelling a maniac, but the AOG is coming into the action right now. Let's see what happens. At a step of HP, a maniac will be taken down by the Erital with a diversion play. Will it be a That savage? No, that's the Lord crazy. will be taken down, and the Suyu will not be there to take up the Lord. What a way to take up the maniac from the Irithel with a diversion play coming into the action, as well as she managed to take the Lord with the help of the Martyrs. The full team was waiting for that one chance burger, and they literally went for that, and they claimed it. The best maniac I can say in this Battle of Ancient series. Right now, the situations demands a lot from the Crown Valkyries. They are way to swipe out the whole TK Bhai Esports. I mean, that was a really crazy maniac, I would say, as you mentioned. But then, I mean, why didn't they take action? I mean, Jawhead was present in the bush. So with that, I guess he probably saw the ult coming in, but then probably he thought nobody would, address and then home in if they are seeing the Jawhead into that. But then that was a whole miscalculation. But then as we talk, that's what I was talking about. Uh, Irithel getting the damage spike in the late game and using her sprint and closing in the distance which she requires and bursting out the enemies. And I mean that was a really fine job done as well as by Louis. And then you also do have the Matilda just for the crucial saves with her guiding wind because of course it provides the teammates with health as well as shield. So yeah. Obviously, and we can say that the way they were hiding into the bush and coming into the action, and the Lord still everything was totally smooth from the side of Crown Valkyries. Even though that Suyu was there, he was in the off side of the Lord, but he couldn't reach into the time, couldn't give that retreat which they needed at that time, which is needed the most at that time. This is what I mean. Diversion play walks. I mean, Burger, you were talking about. No more. We haven't seen so much diversion play, but then suddenly, I mean, a Yeah. maximized diversion play came into the action, and Yeah. look at that. The trailer finished. The film was finished at that moment, but right now we can see the Lord has given some damage to the Land of Dawn, and we can see one innovator has been down into in the meantime, and they are right now back into the match. And look at the goal lead, which was 9K at a moment, is right now not even 1K. One. Yeah, that's crazy. I mean, that's pretty crazy. And guys, I mean, from our whole team, we are really sorry about the inconvenience we are having. I mean, our OBS is crashing over and over. So I guess, you won't be much angry on us. But then we can also see a team fight breaking in. No, but no, I guess it was a misplacement from Gatut Kacha, and he would be using the AOG for the escape. So what do you think? I mean, Sicilian so high in damage right now. I mean, what do you think? Where the odd lies in this match? I mean, anything can be happen at this moment because look at that. The goal lead is not much, and as there is a dialogue, you maybe know about it, Burger. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बर्गर बाबू. It's like that. एक लॉर्ड की कीमत Okay. तुम क्या जानो. ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है इस लॉर्ड पे. Or and look at that. The fight is over there, and Yeah. Rohit, the Phobius will be slain by the Louis, and there will be a redemption coming from the Beatrix right now with a shot onto the Gatot Kacha. 1-for-1 trade. The Phobius and the EXP laner Gatot Kacha will be taken out, and the Lord dance started from the side of Team TK by Esports. They want to claim this Lord into their side. This Luminous Lord, the diversion play into the action. The Beatrix will be tormented down, as well as the Lord will be secured by the Suyu. The retreat battle won by the Suyu right now, with a bad impact coming from the Team TK by, and there will be a killing spree coming from the Martyrs, a decimation, and a shutdown to the Irithel after the Maniac unstoppable coming from the Suyu right now. 3-man down from the side of Team Crown Valkyries, and it will be a 4-man because the Louis will be slain down by the Sicilian. The Elemental Lord will be coming soon, and a double kill will be secured by the Sicilian. The Matilda will be tormented. Only Marcus in the base. Elemental, no. Luminous Lord is coming into the action, coming to the base. Only the Martyrs and Gatotkacha are living right now into the land of Dawn. Will they manage to defend this Lord? Will they manage to take on the great mega minions, the Lord minions? I mean, they probably would, because I mean, Erithel is about to spawn in a few seconds, so I guess it would be a defend.
But if okay, we can't see any mages or marksmen around, so I guess it would be an easy defend. But I maybe the inhibitor, more inhibitor would be getting pushed out. But we have to see though, because Lord is getting melted out by the as we speak. The Lord is getting melted out by Erithil, so I guess it's a defend. And I mean, we would need to see a more fight, one more fight to decide which team would be taking this game on their hands. Obviously, and we can see that defense has been done from the side of Team Crown Valkyries. And as we are talking about the match play coming from them, the diversion into the action was too much OP. But at the meantime, Yeah. be a retreat battle. I mean, into the side of Crown Valkyries, they must be saying this to their hyper. What happened to you? The diversion was onto the point. The Irithal's damage was onto the point, but you couldn't take up the Lord at that moment. Suyu was too OP at that moment. I mean, it could have been happened if the Suyu was there in the second Lord moment, but it's okay. I mean, still now the match is getting into the late game phase. 3K goal lead doesn't matter right now because in the late game, even if you're having a 10K goal lead, that doesn't matter because all the itemization will be finished up from both the teams. As you can see, already finished from both the teams right now. They are going, and must be Lu is having one more build to be into action, but still she's giving so much damage right now. The ejector coming from the jawhead into overextension phase will not be punished down over there because they will be retreating back to a safer zone. But look at that, Gatot Kacha joining out the enemies from the bush, and we can see the Martyrs with the mortal coil trying to finish up the minions from the top side. Right now, the match is in the equilibrium. The diversion play into the action, and the Irithel will be securing a kill onto the Beatrix right now. Irithel, the Maniac Queen, will be taking down the but the Louis will not be spared by the team TK by. They will be skilling onto that Louis, and right now we can see the Jawhead falling down from the Irithel. It is not an official double kill, but it's a double kill from the Irithel. At a sever of HP, the whole team wants to back, but the charge coming from the Suyu is too much. The Mortal Coil will be into action for the save, and the minions who were claiming the base will cannot be claiming the base. They will be cleared down by the team Crown Valkyries, and one more Lord into the action. No Louis. What will happen, Burger? I mean, this would be a risky play if they try to invade. I mean, they would only be able to depend on the guiding wind from the Matilda. But previously, as you mentioned, I mean, the team Valkyrie, why didn't they secure the turtle? I guess it was because of the retreat gap, but then the fight is starting on. Yup. And look at that. The Lord fight already started, and the damage coming from the backline is the Sicilian. The Katotkacha will be melted down by the Sicilian and the Phobius, but the Phobius will be claiming the kill into his hand, and they will be retreating back to the base. They want to defend it. The diversion is still onto the hand of Louis. Let's see what happens. The Lord is in the half HP. We can must we see a diversion, but look at the Jawhead joining out the diversion phase, and the diversion will be into the base, but nobody will coming with the diversion. Oh, that's a unique thing. They don't want to take this Lord up. Because I mean, if anything mistake, if one mistake will be happen over there, I mean, you have a correct diversion, you will be getting two more kills. But what if they will get the Lord and they will be wiping out, or they will be taking your three heroes at a moment? I mean, this is a luminous Lord. This is a level 4 Lord, Burger. You cannot take a risk right now. You can defend it standing in your base because you have that damage, you have the itemization into your hand right now. It's being a late game. You can have that thing that you can defend it, but you cannot take a mistake. I mean, you cannot take a blunder right now. I mean, that's true, as they don't have their tank on their team, so I mean, they can't take a fight on the head. But then, anyways, the Lord would be charging in from the top side. So, what do you think? Which team is gonna get this match onto their hands? Yep, and look at that. The Lord is right now heading into the base of Team Crown Valkyries. This is a BO3, and the first match always said as the test match or a bait match. But look at this first state is right now cooking up the Lord into the base. They will be targeting the base right now. Look at the Suyu and the AOT into the Demon right now, taking up three people, but it will be a mega kill coming from the Martyrs, the decimation play, and the Suyu will be shut down with a My killing spree, and God. the defend of the Lord with the phobias getting down over there. Three man down, minions for raising towards the base right now, and five man still up for the Crown Valkyries. Only two body over there. Diversion play into the action at a saber of HP. Look at that, Sicilian. He will be retreating back to the base, but look at the time for the resurrection
for all those three members. But the minions right now, the lane management is giving up a headache to the side of Valkyries. I mean, they could have gone with the minions up there to the side of team TK Bhai, but minions coming from the mega minions coming from the side of TK Bhai is right now obstructing them. And in the meantime, we can see that there will be all those members of TK Bhai resurrecting back in the land of Dawn. And that's true. And look at that, just scaring away people with no diversion, just faking it out. I mean, they're trying to take as much as lead possible. But for now, I guess both the teams are doing a really fine job, and especially I would say Team Valkyries are doing humongously great as they are defending it out really well, even though it was the fourth level Lord. And I mean, seeing that fight, I guess they they aren't gonna finish this match so easy. They will fight till the last breath. But then, I mean, I guess the next Lord will be deciding factor as by the Lord increases the damage and the Lord blessing will be, heading to the team which gets it. And I mean, with the blessing, your damage rises up rapidly. Obviously, today I think the moon's energy is not with us. Therefore, all this Yeah, inconvenience is happening. But our yeah, production unit has a super hand, so they will be clearing it soon. They will be, yeah, managing to take off the match again. They will be coming back soon. So before that, we can talk about the match. So many turning events happened, Bugger. I mean, you already have seen four lords, already have seen a yeah, maniac with a diversion play. You already have seen yeah. a defend to the level 4 lord in the base, creating True, chaos true. from the side of team Valkyries. They managed to take off three man and the Lord at a peak moment, we can say, when they could Yeah, have taken the match into their hand. So the team Valkyries don't want to give up. They literally fighting for this win. They want this win into their hand. This is what the quarterfinal is. This is what intense match seen as. This is what we are paying our internet bills for. yeah. I mean, that's true. I mean, these kind of fights are really interesting to see. And I mean, as you mentioned, it's just the first match, and look at the heat coming in from the both of the sides. So I guess, I mean, even if this goes for a second or the third match, I think it would be a lot interesting to see because the competition level they are, showing us competing within against each other. I mean, that's humongous. But for now, I mean, we can't tell much. I guess they already have started fighting for a match, but no, I mean, the match has already ended. I guess, yeah, it's a match, and then I guess due to our inconvenience, you couldn't see the ending, but we have to see. I mean, wait. Let's see. I also can't see anything, so I can't say that. Uh, I mean, Yeah, this things happens sometimes because we are doing our best to show you the best gameplay, but sometimes, yeah, I mean, this is what machine is. I mean, this is what you what we can say. I mean, system is. Sometimes this type of blunder happens. I mean, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, तो बड़े बड़े इवेंट्स में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है. So it can be manageable, it can be, I mean, easily onto the way. But no, 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 there is action, there is action. Look at that, the base is in the center of HP. I don't know what happened, but whatever happened has already into the mind of the both the teams. Look at the score, 2020. Look at the goal, 86-86. Look at the I mean, base towers 0-0, and look at the two bases still open. Three man coming on to the base of team Crown Valkyries with the minions, with the humongous minions, but the bad fist over there with the angels coming from the Gatotkacha. He will be managing to defending the minions right now. The AOG for the save, for the retreat. Still, the match is not into the ending phase. One more Lord into the action. Whom do you think gonna claim this Lord? Whom do you think gonna win this match? Okay, okay, okay. TK Bhai is right now heading onto the Lord. The Lord dance already started. Louis with the diversion. And look at that, Marta's back, Matilda back.
one more guy to back over here, and this Lord is not easy to take up. But at a saver of HP, the Lord, let's see what happens. It will be a retreat coming from the Suyu. He will be managing to take on the Lord into his hand. The level 5, my goodness, I can't even say this. The level 6 Lord will be foraging towards the base of Team Valkyries. Full member, I one mean, Lord, yeah, Burger, me, audience, everyone is here. What will happen, yeah. Burger? I'm excited. I'm excited about it. Yeah, man. I'm excited, and I'm really excited to see if they can clutch it out and bring the match back into their you know pace again. I mean, if Crown Valkyries take they slow it down and makes it a defense. I guess it's gonna be the longest match you have ever witnessed and casted. I mean, for me, it's already the longest match for me. And the action, I mean, it's not just they are just speaking out loud and defending. No, the action is fulfilled. I mean, I don't have popcorn. That's what I'm regretting right now. But anyways, the Lord will be closing in from the mid lane. This is the best match of the Battle of Ancients, we can say. I mean, they're still trying. The Yeah. team Valkyrie is still trying. They don't want to lose. They don't want to give up. But look at the level 6 Lord entering into the base right now. The Vengeance is on the AOG onto no one. This. You can't do this. Louis will be severed. Oh my Base will God. be chewed down by the team. Yeah. UK by I Esports mean, claiming the victory into their side after a long 26 minutes, 27 minutes, I can say. They will be taking up no, this it's victory. 30 minutes. It Okay, was. sorry, 30 minutes. Yep. Sorry. After a long 30 minutes, they will be claiming this victory to onto their side. But what a gameplay! What a gameplay Yeah. from the side of Team Valkyrie. Burger, explain it. I I will say mean, something about the Valkyrie. This is the first set. I mean, that's the thing. It's just the first set, and we could see so much already in. I mean, they are giving it all out. I mean, both the teams, TKBY as well as Team Valkyrie. And as we look at the statistics, I mean, look at the team fight participation from the both of the sides. I mean, it's great. And if we look into the winning team's damage dealt, it's gonna be obviously man Sicilian because you saw the damage onto the fifth and the sixth lord, the way he melted down enemies. I mean, that was really great to see. And you know, it's not just the lord's damage which you need to take care of. It's also, I mean, not just the hero's damage. It's also the lord's damage towards your objectives. As I mean, obviously your base or your turrets. I mean, that's really high. And as you saw, with just one hit, the lord almost took down 70 to 80% of the HP from the base. I mean, and that was enough because I mean, you also have the Beatrix or Sicilian, I would say. I mean, Beatrix is enough to finish off with her basic attack, and if Soyu closes in with, I mean, with her Soul Savior or you could say Blade Surge, I mean, a basic attack would be enough to finish the base off. And I mean, that's it. That was a really wholesome gameplay shown by Team CK by, and I mean, a really great applaud to Crown Valkyries because the way they showed it, showcased them their plays. That was really great to see. Specifically, I would say, the placement from Erythale. I mean, it felt on. I mean, it got a bit messed up in the sixth slot. They should have positioned themselves a bit, in front. I mean that's okay because they also were scared of the damage output from Sicilian. So I guess it's fine. Obviously, the Queens literally done a lot in this match. They tried to take off this match, but what a gameplay from their side! They literally took the game to the 30 minutes, even after, having a bad game into the early side. But then, in the mid to late, we saw the spike coming from them, managing to equalize the 8K, 9K goal lead, which was at a moment, Burger, if you remember that. And then they managed to equalize the skills. They managed to equalize map control into their hand. But it's okay. I mean, win or lose is a part of game. But you have literally tried your best, and this is just the first set. It's a BO3. It's the same quarterfinals of Battle of Ancients. Anything can be happen in the second set. You have two more chances. Let's go for it. Let's see what will happen. Will there be a comeback, or will we gonna see a clean sweep from the TK by Esports? Let's see. Let's head into the next match after a short break.
Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. Yeah, let's go. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. It's so cold. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. It's so cold. Yeah, let's go. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to the Battle of Ancients Season 1. And again, we are here into the first game of the quarterfinals. That's between TK Bhai versus
team Valkyrie, that is Crown Valkyrie. The first set was too much exciting, having so many turning events, but in the end, TK Bhai claimed their victory and make the score 1 not. But right now, we're heading into the second set. It's a BO3 in the casting deck. It's a boy STZ, and with me to entertain you all with a beautiful analysis, none other than Yeah, the Burgi. yeah. My God, I'm just too embarrassed right now. Don't say all this to me. Just a newbie. But anyways, guys, the previous match, as Ash mentioned already, was really interesting. If you haven't seen it, go and take. I would say it was 30 minutes match. So you do have to take in 35 minutes back to the video and see the whole match. Not the whole match. Watch the last, I would say, 10 minutes because that was really intense. But anyways, in this match, it's gonna be again these two teams fighting, and TK Bhai do have the lead, so they do have the upper hand, as well as some of the stress has been reduced as they already have the one match on their head. So I guess it's gonna be Crown Valkyrie is kind of pacing up in this match and trying to take us as much meta picks as possible because this match is really necessary for for them to staying in the tournament, and that's the main point of fighting best of three here. And we also would like to see the fights going up to the third match. But anyways, talking about the drafting phase, it's gonna be the banning phase starting in which has started already, and some of the really cool meta picks are getting banned out here. Lucas, great EXP. Then we can see Matilda would be a really great support. Previous match we saw how she marked out the back laners with her circling eagle. That was really great to see, as well as you could see a Badang getting banned out. We haven't seen Badang in play, but we know this hero's potential. It can, disinterrupt the whole team fight with his fist break or fist wind, or I would say fist crack. Any of the three skills will work. And my lady, Lucian, will be always sitting back on to the banning section because why not to ban this amazing hero which can literally snowball from the early game. Yep. And the thing is, Burger, this match is a Yeah, match point match for Team TK Bhai, and it's yeah, need to win match. yeah. They need That's to the win thing. this, otherwise they will be out from the tournament. The That's the thing. Yeah, the thing they did in the last match, in the previous one, the way they yeah. played, the way they took the match in the last minute of the game, they deserve a Mm. win. They deserve a place in the semi-finals. That's what I feel from the side of Yeah, Team Valkyries. But we all know that the victory will be claimed. I mean, the victory got claimed by the Team TK, so they also deserve the win. Anything can be happen this match. I'm not supporting a single team. I'm supporting both the teams. I'm supporting gameplay. Yeah. yeah, Who will be yeah, playing the best gameplay? I'm supporting them. It's yeah. all about the game. I'm not supporting any team. I'm not a biased caster. This is what I want to say. And before that, you can see the draft phase going on and the banning phase already done. And this time, Sonia will be with the Alpha, and there will be a CC for the Matilda without D. I mean Matilda Yeah, without D. That means Mathila. yeah. That's the thing. It's gonna be Lalit. Yeah. But then, as you mentioned us previously, obviously you're not biased. But then, who wouldn't like to see the last match? Yeah, Because both of the teams would be tense there, right? So, this match, we hope to see Crown Valkyries to execute, the performance, maybe better than the previous match. Yeah, maybe yeah, Leonid Hers is right now raising up with the skins towards the girls or what? maybe, maybe not. But then, I don't think so. Because this is a tournament lobby, so you can flex any skins. But then I'm not saying he doesn't have skins on him. He may. He has, but then
in tournament lobby. And I mean, gameplay wise, it's pretty useless if you show skills and no skills. I'm not saying Leo needs horse, doesn't have skills. I mean, but as a general aspect, I'm saying that's all. But then looking into the second, I mean, drafting phase that we haven't talked about. I mean, you have talked about obviously uh, the CC is there. You have the great Alpha to melt down any great, I mean, high HP hero. You also, have Hylos onto the side of Crown Valkyrie. So I think they do have a really amazing chase down and aggressive lineup if we see. And towards, if we say TK Bhai, they do have the Soyu, which is a great snowball hero from the early game. And then you also have the Sicilian again on their side, because I mean, this hero served a lot in the previous fights, in previous games fights. So I mean, you can't let this hero, be taken by the opponents, as it could really be a turning point for them. And this time TK Bhai would be taking on the Katot Kasha, because I mean, why not? The AUG is a really great, I would say ultimate. If you want to break down the opponent's whole, the whole rotation, or you want to catch up to a running opponent, or you want to, initiate a fight, that's a really amazing, ultimate you can have if you want to have an aggressive gameplay. Yes, superb, superb analysis coming from the side of Burger for sure. And right now we can Correct. see that the Irithel got banned. I mean, and the Louis also. They saw what Chibi was doing with her Louis and with her diversion play into the late side. So this time there will no Louis for the team Valkyrie, but we can see a carry ban onto the straight point from the side of team Crown Valkyries, and there will be a Nathan. Okay, his comfort. Nathan Furte will be going with the Nathan right now, and this will be a fun match to watch. I mean, a comfort pick rather than going with a Yeah. Granger. Trading this Nathan for a Granger is a, I mean, big thing from the side of THB. But we can see after they just picked that Nathan straight onto the Granger pick coming from the side of Crown Valkyries. Clarin with the Granger. The girls are ready with the bullets, and there will be a IMU situation because Valentina is onto the panel. Let's see Yeah. whom he will pick. But the Chibi has so many options. He has a great hero pull. I mean, I go Chibi. What are you gonna go for? I want to see that. Will it be a Valentina or will it be a okay? The Riz has already done. I mean, Leo mode was shown by Leonid Ars, and Chibi will be going with the Vexana, the Queen. And we can see the last pick coming from the side of THB. What it will be? I mean, a Rome or a EXP. I mean, this would be a Rome, I would say. Yes. I mean, so Rome would also be a great thing, picking out. I mean, AOG will work. Okay, I'm not saying AOG won't work. AOG will work, but then you can't pop. You don't have the cooldown on AOG to pop. Use it. That much frequently. So if being picked out, I mean, he could serve really well with his Deep Condo and Give the Dragon, as the cooldown is much more comparatively lower. But I mean, they are showing a lot of heroes. But then, would we see another? Okay, there would be another Joe play in this match, and I think Dijin will be. I mean, as the previous match we saw, he did a really great job at marking down the back laners. I mean, this match, I guess he's going with the same strategy. But then, I mean, as you talked about Nathan being the favorite pick from the side of CKY, I guess Nathan has a lot, in potential. But then against the Granger, I'm really doubtful, because in early game, obviously, Granger will have the range advantage as well as the skill advantage, which is mobility. And if he, thinks or, stacks up much on his Sky PSA, I guess Nathan will be, really reverting and thinking back, making the decision of picking this hero, because I mean, it's not a bad hero, but then you need to somewhere follow up the meta. But then let's see if it's his comfort pick. And I mean, Jawhead could really play a great role if he comes in with the ejector play. But then, anyways, let's see. Yep. I mean, pretty same draft from the side of TK Bhai, but there is a lot of change from the side of Crown Valkyries. And right now, as we are proceeding to the Land of Dawn,
for the quarterfinals between team TK Bhai versus Crown Valkyries. The second set, the first set was claimed by the TK Bhai, but right now the girls wants a redemption. The girls want to make the points tied. I mean, one not to 1-1. They're trying their best, and look at that. Both the junglers taking up their aggro. They will be proceeding towards the goal lane rotation. This is a very nice way, but from the beginning, there will be a upper hand for the side of team Crown Valkyries. I mean, the Granger will be easily tormenting that Nathan from the first minute. And look at that. I mean, the invasion was there, but it will not be cleared up. The first blood will be secured by the Sicilian. A lot of damage came from the Joyhead. Then the bat impact onto the point, and it will be a first blood for the side of TK Bai. TK Bai is right now starting with aggressive, I mean, lineup and aggressive situation for them. I mean, they started the aggression. They're showing their aggression right now. Yeah. I mean, once you do have a hold of a match, you do obviously have the confidence to, go in and dive in deep because you have nothing to lose. After this, they also have another chance. So, I mean, they don't want to lose this match, but then they are being confident about it because, I mean, they are losing nothing here. As we talked about the previous skill, that's the problem with early Johead. The smart missiles will do a lot of damage, and I mean, if you're engaged, it's gonna be an easy kill for him. Obviously, and we can see that so much plays are coming from the side of TK Bhai. They are right now having the river control into their hand. The turtle is about to spawn soon into the land of Dawn, the neutral objective. And if you are having the river control, you're having the, I mean, jungle control of the enemy side. You can have the turtle easily into their hand. And look at the bush. He will be finding the high loss over there. High loss are nice drawn out. And look at that. This is what you should do. You should take a buff and come for the turtle fight so that your energy will be there. And when Suyu and this type of junglers need some energy, I mean, onto the retreat battle. Therefore, he just claimed that raid buff and then going for the creep right now. The glorious pathway into the action. It will be vested down before the turtle dance, and right now the whole team for the turtle dance. And look at that great jawhead right now going on to the crown Valkyrie. The bad impact from the backline is giving a lot of damage to the TK by esports. But right now the PC will be claiming a kill onto the jawhead, and the bad impact and the turtle will be slain down by the Suyu, and one more man. Gatotkacha will be getting down by the Vexana. And look at that, the third man, the Suyu, after the turtle got slain, he will also be slain by the Team Crown Valkyries. A great start, even though the neutral objective is not in the hand. They managed to take off 3 kills, and the trade is 3 for none. I mean, that was the thing here. That's why you need to be scared of Alpha, because I mean, Alpha didn't got kills here. He got S's though. I mean, but if we look into the damage output, Alpha really did a great job at melting down with his ultimate, which is Spear of Alpha, obviously. And I mean, with this type of gameplay, I guess and not I guess it's really an advantage for Granger, because it would be really easy to secure out kills as Alpha is there. You also have the Vexena to lower down the HP enemies HP. So I mean, tanking as well as taking down objective would be really easy. Obviously, and we can see the fight is on over there, and the Gato, I mean, the Jawhead will be slain down as well as the Alpha. Sonia will not be spared over there. AOG onto a Natalia side, and the Eternal Guardian right now giving a pokey damage to the Gatot Kacha. But look at that mobility play from the Suyu. He will be fine. Doesn't got any kills, but he will be fine at this moment. He will be getting back into a safer track, but the score is 5-2. We can see from here. Burger. Right now, I, I can see the yeah, equilibrium is into the hand of Team Crown Valkyries. But anything can be happen in the mid lane section. But the ult coming from the Nathan right now will not giving a lot of damage to the Granger. It was for a save. I told you in the early game, Granger will yeah, showcase the Nathan for sure. But I yeah. don't know about the late game. What will happen? I mean, that's the thing. That's the thing which even I agree. But on the top lane, it would be Matilda without D, she would be getting melted down. But then I mean, that's the thing. CC has a ton of regen to her as well as the jump on her, so the bounce will save a lot.
Sure. Look at that glorious pathway. And the AOG this time connected over three people at a saver of HP. Sicilian managed to take up one kill. And Gatot Kacha severing down that Vexana. And Sonia managed to take up kill. But a redemption came from the Sicilian. A killing spree onto the Alpha. Sonia will be sent to the heaven right now. But with My that, God. do you find a kill onto the CC at a saver of HP? Managed to escape back into a safer zone. That Gatot Kacha. Will the Death Sonata hit on him? Will Granger manage to take on him? No. He's retreating back with a No. safer recall. And the turtle dance already started. A free turtle for the side of team TK Bhai, the second neural objective into their hand, 2000 goal into their hand. They will be managing to come back at the situation. I was talking about the equilibrium. Right now, the equilibrium kind of tilted onto the side of team TK Bhai. I mean, having a goal lead of, you could say, 400 isn't that much, but then I guess small thing will stack up in the late. And I mean this, I mean, density is really good with the Suyu, as we can see, marking on to the backlines as well as securing the objectives, and prioritizing. That's the big thing. Prioritizing whom to kill first. That's the thing. Even though you do have, two really good frontliners. I mean, damage deal, not frontliners, obviously. Two really good damage dealers. He's really prioritizing onto the mage, or is waiting for the spear of alpha to getting used. But let's see. Obviously, and we can see the fight is on over there. Glorious pathway and the retreat camp from there. Killing spree for the Granger onto the jawhead. And there will be one man down, and the minions are right now for raising into the third tier of the top bot lane. They will be claiming this turret for easily, and right now the fight is on. The Sicilian will be poked down. The great AOG onto no one vested, and look at that, the spear of alpha from the bush onto the Katot Kacha, giving a lot of damage with the force swing, and the mega kill will be secured by the Granger. A easy mega kill for him, but right now we can see the split push coming from the Nathan, and the ult will be used to get back into a safer track. This is a bad news, Ash. This is a bad news coming from the side of, you would say, Crown Valkyries, because giving out Granger kills to Granger is not much wiser option. Because I mean, he's already stacked up 20 stacks on his Sky PSS. So I mean, after having 30 Sky PSS stacks, it's really, a kind of two-headed sword. Because if he dies, I mean, if he dies, the stacks will do negligible damage. But then if it rises, it will hit rapidly, and as it reaches the level 80, it's gonna hurt a lot. But anyways, the turtle fight will be starting off, as the both the teams, I mean, the five man rotation from both of the sides have been can be seen, and I guess Nathan will be also getting a turret. Sure. And the third neural objective fight is already there. And look at that. So many first moments coming from both these sides. But look at that. They are hiding in the bush. They will be charging out of them. The Sanguine Claws miss. They will be joining out over there. And right now, the glorious pathway up. But the turtle will be slain by the Alpha. Nice retreat. Back piece already on. Unstoppable for the Granger. Double kill secured by the Granger onto the jawhead. Right now, the Rhapsody battle will be not end, because there's a shutdown coming from the CC with the cotton coil onto the Sicilian. The Sicilian will be tormented down by the CC. The CCC movement. I mean, I don't know if you have not noticed or not. Gatutkacha, I don't know for what reasons, used the ultimate on the mid lane even before the fight started. I guess this is one of the factors here. TK Bhai can lose the match, because I mean, he's missing a lot with his ultimate. But anyways, the top lane, we can see a fight again. Yup. And look at that. They will be back into a safer track. They don't want to engage right now because the Yeah. match is kind of into the hand of Team Crown Valkyries. If they will be unnecessarily throwing gold at this moment, it will not help them to win. It will help Valkyries to claim the throne. Yeah, that's the thing. They can't really risk out, giving out a match so easy onto the side. But then, I mean, I'm really interested to see the late game scenario. The Nathan, as we can see, Nathan Le Fute being played, but another team fight will be starting in.
Yup. Spear of Alpha into a wrong position. Sonia right now giving force swing, and there will be a glorious pathway which will be tormenting that Sicilian up over there. Eternal Guardian for the rescue, for the stun, but will not be managing to take on any more fatalities. One for non-trade. Sonia was literally in a bad position, but managed to come back with the help of the Hylos. What a nice escape, and what a nice, help from the Yeah, Hylos. that's the thing. Hylos is a really great asset if you are closing in with in I would say the close lanes or the buffs. He could do a really fine job at cornering down or slowing down enemies with his ultimate, and as well as giving a speed boost to his teammates. And I mean, usually Hylos goes with and revitalize, but anyway, Sonia will be securing the Lord for herself. And look at that, Destiny is being sneaky, just pushing out, the tier lanes. And I mean, they are going back now, just clearing out lanes and to defend this Lord, not trying to give any of the turrets, and trying to be annoying to Team Crown well carries and not letting them economize this Lord. And I mean, that's their whole plan for now is, and they are just speeding up the Sicilian right now. Yep, I mean having the chances onto your side, having the turrets into your side, getting the Lord right now, the neutral objective, and Yeah, they are fine right now. They can be winning this match. They can be equalizing the set 1-1. They can do this yeah. score, but right now look at that flicker from the jawhead, and it will be Vexana getting down over there. What a nice damage coming from the UK by esports. They will be defending the Lord in the second tier of the bot lane, but the second tier will be tormented down from the side of Crown Valkyries, and the Death Sonata Rhapsody will be not giving a lot of damage to the TK by players. I mean, Granger has already stacked, 40 stacks on his Sky Piercer, and I guess it's enough for now. I mean, if he gathers out more, he will be more snowballing by some time. But then, I mean, the ejector play that was really quick, and for a second, I thought he ejected away. He ejected his own teammate, but then it was Vixena who got picked out. So I guess it's really fine. And I mean, Vision, I guess it's really his comfort pick. So yeah, I mean, if you have a comfort pick, you, as you mentioned in the previous match, you can Yeah. counter your counter. So that's the thing. Ejection is better than rejection. Yeah, So that's yeah, what we can say. Anything, guys. Ejection is better. I'm telling that. yeah, And look at that ulti coming from the Natan side onto the CC. She will be fine. She will be getting back into a safer zone. But right now, Sonia to pick up the purple buff will not be, I mean, happily securing it because the retreat play came from the Suyu. He will be managing to take it back into his side. We can say that the pace is right now kind of turn off from both the sides. They don't want to, take up the pace again and throwing some goals, but a kind of we can say that that one kill and that Lord defend was a point in this match, which was literally give them a kind of goal, a little bit of goal. We had saw that there was a 6K goal lead, but right now there is just a 3K. yeah. I mean, just the tricky goal lead. I don't think so. It's much. Probably, one or two mini items per hero, probably depending on the price of the mini item. But then we also can see the Lord spawning, and the level 2 Lord will be spawning in through the riverside. And I guess Destiny is trying to be sneaky here. And let's see. I mean, another team fight can break in as both the side are just poking in each other with the damage output. And I mean, if Hylos puts up a really great, I will say, glorious path, this could be a turning point for team, Crown Valkyries again. Seriously, and we can say that the moment is kind of tilting towards right now onto the TK Bhai because they had ton of the pace and they wants to get back into that gold equalizing strategy, which which has already done by the Valkyrie
in the previous match. But right now, the Lord Dance is going very slowly. Again, the flicker and the ejector play coming onto the hand. The glorious pathway, and this time again, they will be happening. They will be claiming the kill onto the Vexana. Godlike from the Granger. Double kill will be from the Nathan. And the victory battle will be won by the Suyu. Triple kill for the Nathan. I'm smelling a maniac. I'm smelling a maniac charge coming onto the Granger right now. The Nathan with the damage onto that Granger. The Rhapsody is right now giving a lot of damage, but at a saver of HP. This My Granger will be God. shut down by the Lord. There will be no maniac, but unstoppable for the Nathan. What a way to take on that unstoppable with the Lord right now for raging onto the base. Are they literally throw this match to TK Bhai, or what just happened right now? They managed to take the Lord. They managed to take up 4 kills. And right now, Nathan back into the game. The Eternal Guardian popping over there. The Vexana again getting down. The Lord is going into the base. They're claiming the base. They're charging out of the base. They are securing the base. They will lock it. And they will be winning this match. They will be qualifying into the semi-finals. They will be whitewashing the whole team of Crown Valkyries, even though the start was into their hand, even though the usual objectives was into their hand, the turrets was into their hand, but one mistake. Yeah. एक लॉर्ड की कीमत तुम क्या जानो वैल्किरी रानियों. I mean, that Yeah. was just happened right now. They I literally mean, took the luminous lord. They literally took a false maniac, we can say. Munton didn't give it, but it was a maniac. It was a yeah, game yeah. That's the thing. moment. Nathan, the Lamas Puerte, Nathan Lamas Puerte literally went for the comfort pick, and then he literally distorted the whole crowned Valkyries. They will not be crowned in this tournament. Their Yeah. throne has been taken away by TK Bhai, and TK Yeah. Bhai will be raising themselves into the semi-finals. Burger, second set, so much turning events. After the Yeah. first set, the way Valkyrie played, I was hoping for a win, and even they literally managed to take on this match. They were playing too good. Yeah. Yeah. Sonia with Alpha, the spear of Alpha was onto the point every time. But what just happened? Why they And just I mean, yeah, I mean, in this match, I guess, as you said, the minor placement, macro rotation, everything matters. And I guess the placement, from Hylos with his glorious path was really great. But then Alpha dived in too deep, which gave Nathan the chance to melt him down. Usually, Nathan doesn't charges upon an alpha because you mostly you usually see an alpha. I mean, sometimes he's not usually, but sometimes you see an alpha with a vengeance. So yeah, but in this match he is going to retreat, so it's really easy to melt down this alpha. So yeah, Nathan took the fullest advantage from this, economized to the fullest potential. And I mean, as you saw the maniac, which was not given by Moontone, which was officially maniac, but then uh I mean, the because of the Lord, I guess there's a Lord hit it at the last, so the maniac was not given or something in that. So but then I mean, it was a really great match though. Both of the sides, especially as you mentioned, the leading Valkyries were leading in this match. That was really true, and that was really effective because CC was zoning out the opponents, soaking in damage with her vengeance, as well as you had Hylos soaking damage. Then you did have Granger securing some kills for his team and stacking upon his Sky Piercers. So it was a really well match going on between these two teams. But then one small mistake, one over aggressive move, one out of placement move, I mean, that turned out all. And I mean, that was a big thing. Then Nathan, took out two of the people, then took the triple kill, and Lord did his job clearing out Granger. So yeah, that was a really fulfillment. And the way they, with the Lord, the way they pushed in for the base, that was, we literally saw the hunger in their eyes, to win this match. The way they pushed in with the last Lord. if you have heard a quote from Bruce Lee, he always told Yeah, that I mean, he don't fear if you have no 1000 kung fu styles. He yeah, feared that one style you have practiced for 1000 times. yeah, yeah, Okay, that's the thing. What happened here? I mean, you can take 100 meta, you can take 100 counter picks,
there will be one comfort pick in which you have played 7K matches will be winning you the whole match because you know each and every micro macro mechanics of that hero. Yeah. You have been playing for 7K. I mean, you have been playing for 7K matches that hero. You know everything about him. You know how to take up the match at which moment you should do. If you have seen the Nathan, he knows that he Yeah. don't have upper hand in the early game. Therefore, he didn't indulge a lot in the early game. But in the late Yeah. game, he showed his potential, taking up the Yeah. Lord, taking up that triple kill and that unstoppable onto the Granger, and then the game-changing moment happened. Locked the base, locked the match, and locked the spot for the semi-finals. This is what happens right now. What a nice match! It was literally paying the internet bills while a match because it happened like that. Each of our every family members, I mean all those Ryuka ML fam subscribers, they literally enjoyed this match a lot. Even as a caster, I enjoyed this match a lot. Well played, girls. You have tried your best, Valkyrie. You will be Yeah. shining again in some other tournament, but this day will be remembered as TK by Esports Day because they will be claiming the throne into their hand. They will be going into the next round. What a nice match. With this, we'll be taking a short break. We'll be coming with another BO3, another quarterfinal match of tonight, which is between Team Da Familia versus Team. Okay. It's gonna be best or burst. Best or bust. Yep, yep. I mean, Yeah. I was thinking, what should I say? Best or bust or good or best? So I was thinking about that. The best of bust. They are literally a great team. And with them, Yeah. the Familia. I mean, all these guys have played a lot in the previous rounds and came up to this place playing this quarterfinals, BO3. So don't go anywhere. Stay tuned with us. Open your chips packets. Like the stream, share the stream to your friends. Let them also enjoy this type of intense matches. You can also try burger if you are Oh liking my God. burger. You can eat those burgers. You can eat our Yeah. custom burger even if you want. I mean, so many girls are fans of him, so you can do that. Okay, so with that, Yeah. we're taking a short break, and Yeah. Burger and Steezy will be signing off, guys. Burger, you want to say something to our fans? I mean, TK bhai, jeet gaye bhai. That's all I could say. And as Ash mentioned, the next match would be more intense and interesting. Yep. So don't go anywhere. Just stay tuned, and we would be back after a really short break. So guys, do subscribe the channel, like it, as well as spread it as much as possible with your MLBB enthusiasts. And with this, it would be Ash TZ and Burger signing off for today. So good night, guys. Good night. Good night. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold
Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone.
तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका। ये कौन है राउंड में, ये है क्वार्टर फाइनल्स बैटल ऑफ एशियंस और यहाँ पे जो है फाइट होने वाला है दो टीम्स के बीच में। मैं हूँ आपका कास्टर शिनरा और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे को कास्टर जय। तो जानेंगे उनसे। तो जय भाई, क्या लगता है ये जो दो टीम है द फेमिलियर वर्सेस बेस्ट और बस्ट, क्या लगता है इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा? बेस्ट और बस्ट हमने पहले भी कई दूसरे टूर्नामेंट्स में भी देखा है खेलते हुए उनको। तो मैं तो कहना चाहूंगा एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी दूसरी टीम है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, द फेमिला के बारे में? शायद लगता है यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन जो है टेक्निकल इशू आ रहा है गाइस। तब तक हम लोग कैरी करते हैं। तो फर्स्ट बैन जो यहाँ पे देखने को हमें मिला है वो है यहाँ पे हेरित, और दूसरी तरफ से हमें जो देखने को मिला सुयू। काफी अच्छे बैन मैं कहूंगा, मोबिलिटी वाले हीरोज यहाँ पे बैन करते हुए। उसी के साथ जो सेकंड बैन हमें क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे मोबिलिटी वाले हीरोज की बात करी थी फैनी जी हमारी, उनको बैन कर दिया गया है। केबल इन एंड आउट करके जो आती हैं अपना ब्लू बफ लेने के बाद ही सेकंड जो है, जो अपना सेकंड लेवल है उसी पे ही जो अपना दबदबा यहाँ पे बना लेती है, उनको बैन कर दिया गया है। और दूसरी साइड से बेस्ट टू बेस्ट की बेस्ट सॉरी बेस्ट टू बेस्ट की तरफ से क्या हमें यहाँ पे बैन देखने को मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। सेकंड बैन यहाँ पे मैच का वो किस तरफ जाएगा? जी, यहाँ पे तो बहुत सारे बैंड्स है। सेलेना सेलेना है, फिर आपका लुकास है, फिर यहाँ पे जुशी नवाइनोso सर की बुरी अम्मा जो हमारे एसटीजी भाई लास्ट मैच में शायद बोल के भी गए होंगे, उनका बैन की चांस देखने को मिल सकता है। फिर हमारे पास अल्फा हो गया, बादाम हो गया, ये सब बैंड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ शिंडा भाई जो बेस्ट ऑफ बस्ट टीम है, बेस्ट ऑफ बस्ट वो बढ़िया टीम है। मैंने पहले भी इनके मैच देखे, हमने कास्टिंग भी की है। द फेमिलिया जो टीम है उनका तो मुझे पता नहीं, अभी शायद जो अंडरडॉग्स टीम्स में है वो, तो मुझे इनका मैच देखना पड़ेगा क्या होता है। इसी के साथ जो हमारे मातिल्डा जो है हमारी पंची रानी, उनको बैन कर दिया गया है। तो अभी शायद जुशिन बैन देखने को मिल सकता है, क्या बोलते हो शिंडा भाई? जी हाँ बिल्कुल, जूशियन भी ओपन है, जूलियन भी ओपन है, बदांग भी ओपन है। क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे? देखिए, एक जो है वो बैन तो जाएगा, लेकिन उसी के साथ जो यहाँ पे फर्स्ट पिक जो पिक करेगा उसके साथ साथ यहाँ पे दो मेटा पिक दूसरी साइड की टीम को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट जो बैन है वो देखेंगे, थोड़ा सोच विमर्श किया जा रहा है अपनी टीम से, जो है थोड़ा वार्तालाप किया जा रहा है यहाँ पे, एकदम से बैन नहीं कर रहे, थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से जूशिन बैन होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। अगर आप जो है वो कंटिन्यूअसली जो है आपको डैमेज सीसी बहुत ज्यादा देती है, शायद उनको बैन करना चाहिए। लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या बैन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मेलिसा बैन कर दी गई है। तो यहाँ पे शायद चाहते हैं कि एक जो है उनको पिक मिल जाए, और उसी के साथ यहाँ पे जो दो मेटा पिक्स है वो रेड टीम को जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही एक मैं कहूंगा बेहतरीन स्ट्रेटेजी है ये। जी, इसी के साथ शिंडा भाई देखिए, हमें फर्स्ट पिक जो है यहाँ पे जुशिन देखने को मिला है, लेकिन इसी के साथ जो है दूसरी रेड टीम बेस्ट और बास्ट को जो मौका मिलेगा दो मेटा हीरो उठाने का, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जूलियन पीक हो सकता है, यहाँ पे लुकस पीक हो सकता है, यहाँ पे अल्फा पीक हो सकता है, यहाँ पे बादाम पीक हो सकता है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है मेटा हीरोज में से। तो ये इंटरेस्टिंग पिक होगा देखने के लिए। शायद इसीलिए जो है ना बेस्ट और बस्ट ने जो आपका जुशिन का काउंटर है वो रख लेंगे बाद में। इसका देखिए यहाँ पे जॉय तो पिक किया गया है, जो बहुत ही अच्छा पिक है, मोबिलिटी है, बहुत ही अच्छा खासा मोबिलिटी, डैमेज अर्ली गेम जो है स्नोबॉलिंग करने से कर सकती है गेम में, तो बढ़िया पिक है। लेकिन यहाँ पे जो बादाम है ना, बादाम भी पिक कर सकते हैं आप यहाँ पे जूलियन पिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप हायाबुसा पिक कर सकते हैं जो है जुशिन को काउंटर प्रॉपर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ अलग पिक्स देखने को मिल रहे हैं शिंद्रा भाई। नहीं नहीं, थोड़ा सा जो है दिमाग से खेला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उठा लिया गया है सीसी को। हाँ, ये वाली दीदी उठा ली गई है अपनी। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि बदांग नहीं उठाया गया है यहाँ पे। शायद जो है मौका नहीं देना चाहते हैं, और इसी के साथ जो ब्लू टीम है वो उठाएंगे बदांग को। क्या लगता है जय भाई? जी बिल्कुल, यहाँ पे बादाम का मौका है, फिर आपका जूलियन का मौका है, और जो यहाँ पे ऑलरेडी जुशिन को उठाया गया है उनका जो सीसी इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही बढ़िया लेने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक बात दिखेगा, जो जो आपका जॉय हो गया और सीसी हो गया, उनका मोबिलिटी बहुत है, तो वो जुशिन के पास जाके उनको जो है नॉकआउट कर सकते हैं। उनके पास वो कैपेबिलिटी है जो दो हीरो पिक किए गए। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे इनको जो है कुछ अच्छे फ्रंट लेनर चाहिए, या तो फिर जो है उसको जो जो आएंगे उनको रोकने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ पे देखिए बदांग भैया आ चुके हैं, आटा गूंदने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आ चुके हैं। इनकी बाजू स्टील की है, और ये वॉल लगा के जो आटा गूंदते हैं ना, मुक्को की बरसात आपको करते हैं, मुदा 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 एकदम मुदा कर देते हैं। उसी के साथ यहाँ पे देखिए हायाबुसा को पिक किया गया है, अपने जो निंजा हथौड़ी
जंगलों के पार आते हैं पहाड़ों से ऊपर, डिंग 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 करते हुए। क्या अपनी शैडो स्किल्स का प्रयोग यहाँ पे देखने को भी मिलेगा? कुछ अच्छे शैडो स्किल्स हमें देखने को मिल सकते हैं जय भाई? क्या लगता है कि यहाँ पे हायाबुसा जो पिक किया गया है, क्या अच्छा पिक यहाँ पे साबित होगा, या फिर जो है रेड टीम यहाँ पे टैंक की पिक्स लेके थोड़ा सा इनका जो खाल है वो अलग कर देंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पिक है बढ़िया पिक देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिसिलियन लिया गया है हायाबुसा के अगेंस्ट। हायाबुसा इजीली जो है अपना क्वाड शैडो यूज करते हुए पीछे जाकर सिसिलियन को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हायाबुसा का जो स्पेल है, हमें यहाँ पे वेंजेंस देखने को मिल रहा है। क्या हायाबुसा वेंजेंस लेके कहाँ जाने की सोच रही है? या तो शायद वो बाद में स्पेल चेंज करेंगे। बादाम पिक बहुत ही बढ़िया है, जोशिन पिक बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो मोबिलिटी पिक है, जो टीम बेस्ट और बास्ट है ना, उनका डैमेज और मोबिलिटी दोनों मिक्स पिक हो रहे हैं शिंदा भाई। तो हमें अच्छा खासा पिक देखने को, जो यहाँ पे बढ़िया पिक देखने को मिल रहा है दोनों टीम की तरफ से। अब बात जहाँ पे आएगा वो आएगा टीम कोऑर्डिनेशन और टीम सिनर्जी में। जो हमें हमेशा बोला है कि भैया पिक तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन टीम सिनर्जी कोऑर्डिनेशन बढ़िया नहीं होता तो आप कोई भी जीता हुआ मैच भी हार सकते हो मेटा हीरो लेके। और इसी के साथ देखिए यहाँ पे गाटो को भी बैन किया गया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अल्फा अल्फा बैन होने के चांसेस देखने को मिल सकता है। इसी के साथ जो हमारे डेथ सोनाटे वाले भैया है ग्रेंजर, उनको जो है बैन कर दिया गया है। तो हमें बैन भी कुछ थोड़ा थोड़ा अलग देखने को मिला है, साथ ही साथ जो पीक भी है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है शिंदा भाई यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल पिक्स जो है काफी बढ़िया देखने को मिले हैं, परंतु यहाँ पे हायाबुसा जो है वो मेज को जरूर टारगेट करेंगे, सिसिलियन को जो है। अगर सिसिलियन जी अगर बच गए या फिर नहीं बच पाए, तो यहाँ पे हायाबुसा के ऊपर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आ चुकी है कि जो मेज को है ना वो गायब करे जल्दी जल्दी, क्योंकि उनका जो डैमेज है अगर लेट गेम में पहुंच गया गेम, तो जो सिसिलियन है वो बहुत दिक्कत दे सकता है जूशिन वगैरह को भी, बाकी अपने बादाम वगैरह है उनको भी ज्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि जैसे जैसे गेम बढ़ता है हमने देखा है उनका जो बैक इम्पैक्ट का जो डैमेज है वो इतना ज्यादा आता है। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए मॉस्को जी को बैन कर दिया, हमारे नीरज चोपड़ा जो है उनको बैन कर दिया गया है। और लास्ट बैन क्या देखने हमें मिल सकता है? टैंक अभी भी खुला है, शायद जो है टैंक की तरफ बैन करने के लिए जाएंगे। हाईलाउस जो है अभी भी खुला है, शायद हाईलाउस बैन कर सकते हैं, या फिर कुछ और बैन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है शिंडा भाई लुकास उकास बैन करने की कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उनका एक्सप्लेनर ऑलरेडी पिक हो चुका है और जॉय जाएंगे हाइपर के लिए। तो यहाँ पे हमें टैंक बैन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी प्रॉपर टैंक पिक नहीं हुआ है बेस्ट और बास्ट की तरफ से। तो शायद वो लोग टैंक बैन करेंगे या कोई एमएम बैन कर सकते हैं। एमएम बैन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी बेस्ट और बास्ट की तरफ से कोई एमएम पिक हुआ नहीं है। यहाँ बिल्कुल लास्ट जो बैन उन्होंने किया था यहाँ पे ग्रैंजर किया था, उसी के साथ यहाँ पे एमएम बैन होती हुई वन वन को बैन कर दिया गया है। बैटलफील्ड में नहीं चल पाएंगी ये। और जो है उसी के साथ यहाँ पे दूसरा एमएम पिक हमें देखने को मिला है रेथिल। बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगा एक अच्छा पिक है इरेथिल, काफी अच्छा चलती है, मोबिलिटी वगैरह काफी अच्छा रहता है इनके साथ, और मूविंग करते हुए आप जो है बेसिक अटैक का प्रयोग कर सकते हैं, तो चेज अप करने में भी काफी हेल्प होगी इनको। और उसी के साथ यहाँ पे जो दो पिक यहाँ पे पिक करना चाहेंगे, क्या पिक हो सकते हैं? यहाँ पे टैंक जो है वो एक जरूर पिक किया जाएगा। कौन सा टैंक हो सकता है? हालोस अभी भी खुला हुआ है, क्या कहना चाहते हैं जय भाई इसके बारे में? क्या कौन सा टैंक जो है यहाँ पे वो ज्यादा काबिल तारीफ रहेगा यहाँ पे? आइलोस हो सकता है, आपके पास एटलस का ऑप्शन है आपके पास। मुझे लग रहा है कि बादाम शायद ऐसा ना हो कि बादाम टैंक पे जाए और यहाँ पे एक एक्सप्लेनर पीक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे एमएम बैन की चांसेस दिखेगा, तो एमएम बैन हो गया। जैसे कि मैंने कहा देखिए यहाँ पे चो या कोई एक्सप्लेन होगा, बादाम जाएंगे रोम पे। यही मैं सोच रहा था, मैंने बोला नहीं अभी शिंडा भाई आपको कि बादाम जो है टैंक पे जाएंगे, एक्सप्लेन हमें देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा ही हो रहा है, बहुत ही बढ़िया पीक बोल सकते हो, लेकिन चो सस्टेन कितना कर पाएंगे? जो टीम है द फैमिली है, उनके पास एक अच्छा एडवांटेज है, जो है हायाबुसा, वो इजीली मेल डाउन कर सकते हैं आपका इरिथेल और सिसिलियन को। ये एडवांटेज है अगर हायाबुसा को मौका मिले। और इसी के साथ हमें देखने को मिलेगा एक प्रॉपर टैंक जो है यहाँ से रेड टीम की तरफ से, बेस्ट और बास की तरफ से। ये तो मैं बोल सकता हूँ, इतना तो लग ही रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोशिश की जाएगी ना जो जॉय है उनको रोका जाए अपने जो मेज है उनके ऊपर अटैक करने से, क्योंकि मेज को भी जो सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। तो इसके लिए चाव भी जो है वो भी बहुत ही अच्छे रहेंगे, अगर कोई आता भी तो किक करके हटा सकते हैं। तो यहाँ पे उनको थोड़ा ऑफेंस से ज्यादा हल्का सा मैं कहूंगा डिफेंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जॉय जो है वो आएंगी अगर लेवल फुल होके, वो तुरंत जो है सीधा मेज को ही टारगेट करेंगे ज्यादातर उनको मारने की, या फिर अपने एमएम है उनको मारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरह से ये लोग खेलते हैं। अगर अर्ली गेम पे जो है जूशिन को फार्म मिल गया, तो ये गेम में बहुत ज्यादा दिक्कत देंगे ये लोग। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से जॉ हेड यहाँ पे पिक किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जॉ हेड रोम पे खेलेंगे शायद, और यहाँ पे एक बेहतरीन पिक हो सकता है जॉ हेड, क्योंकि अगर वो ठाल के फेंक दे बदाऊं को या फिर किसी और को, तो काफी दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे बेस्ट बस की तरफ से जो रोमिंग पिक जॉ हेड, बहुत ही बेहतरीन पिक यहाँ पे आता हुआ। या भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, जोएट पिक अच्छा है, बढ़िया है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आप चो को जो है, चो इम्यून है, इम्यून होता है।
सेकंड स्किल से इम्यून हो सकता है, फिर दोबारा जॉयट को किक मिल सकता है। यहाँ पे बादाम को फेंकेंगे, बादाम टैंक मिल जा रहा है, वो सीसी मार के उनके टीम को रोक सकते हैं, टीम के पास ही तो फेंकेंगे। तो इस बारे में मुझे ये तो पता नहीं चल रहा है शिंडा एग्जैक्टली, जो बादाम पी के बढ़िया, सॉरी जॉयट जो पी के ठीक है, लेकिन वो टारगेट किसको करेंगे? क्योंकि अगर वो जो एमएम को पिक टारगेट करते हैं, क्लाउड को, तो क्लाउड को टारगेट करेंगे, क्लाउड का पास सेकंड स्किल होता है मोबिलिटी वाला, वो भाग सकते हैं। अगर डिफेंस थोड़ा सा बिल्ड करते हैं या अर्ली गेम पे भागने की ज्यादा मौका है, तो मैं बस वही देखना चाहूंगा जो हेड यहाँ पे लिया गया है टैंक बिल्ड में, वो किस तरीके से जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है अपना टीम को, ये मैं देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। जी, बिल्कुल, यहाँ पे मेरे को लगता है वो मेज की तरफ ही जाएँगे या फिर एमएम की तरफ ही जाएँगे। जैसे कि आपने कहा कि वो भाग सकते हैं क्लॉड, परंतु वही तो देखने वाली बात होगी ना कि क्या वो रिसोर्सेज़ वेस्ट होने के बाद जाएँगे या किस तरह से वो वेट आउट करते हैं या खुद सैक्रिफाइस क हो जाएँगे, वो किल निकालने के लिए महत्वपूर्ण जो किल है वो निकालने के लिए। वो देखने वाली बात होगी और इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं लैंड ऑफ डॉन में और अपने-अपने जंगलर जाते हुए खेती-बाड़ी की तरफ जाएँगे, अपने-अपने जो बफ़ है उनको मारेंगे, उनके जो क्रीप्स हैं उनको ज़रूर मारेंगे और यहाँ पे जो हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे जॉय की तरफ सारी जो टीम है वो आती हुई और दूसरी तरफ जंगलर हैं वो भी अपनी जो है अपनी-अपनी जगह जा चुके हैं और यहाँ पे हायाबुसा वो स्टार्ट कर रहे हैं ब्लू बफ़ से और इसी के साथ जो जॉय है वो स्टार्ट करेंगी अपनी रेड बफ़ से। दोनों ही जाएँगे जंगल, हो सकता है कि गोल्ड लेन पे क्लैश हमें देखने को मिलेगा और उसी के साथ यहाँ पे देखिए जॉय जो है विज़न प्रोवाइड करते हुए जाएँगे बॉटम लेन पे। बॉटम लेन पे देखिए जिस तरह से फार्म वगैरह चल ही रहा है और यहाँ पे ज़ू आती हुई रोटेशन देंगी ज़रूर। जॉयट को स्पॉट किया गया है यहाँ पे और पीछे हो जाएँगी। जय भाई। जी बिल्कुल शिंडा भाई, यहाँ पे हमें शायद गोल्डन पे गैंग देखने को मिला, क्योंकि सीसी को मारना थोड़ा टफ हो सकता है, तो गोल्डन पे गैंग करके फिर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेन पे जाकर टर्टल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है, क्या पता मिड लेन पे हमें गैंग देखने को मिले, क्योंकि जुशिन को जो है अर्ली गेम से अगर डोमिनेट करेंगे तो लेट गेम में उनको फायदा हो सकता है। इसी के साथ देखिए एक छोटा सा गैंग जो है हमें गोल्डन पे देखने की मौका मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे पकड़ा जाए था जॉयट को लेकिन भाग जाएँगे जॉयट बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए बॉटम लेन पे निहत्थे जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं विदाउट कोई किल यहाँ पे नहीं मिला अभी तक कोई कोई भी जो है जुर्माना किसी को जो है मृत्यु दंड वो अभी तक नहीं मिला है। और जॉय वहाँ पे भाग चुकी है उनको देखिए जिस तरह से जो है बुश पे जा चुकी है और मिड लेन पे वापस आती हुई उनकी टीम पूरी। और कुछ ही देर में हमारे जो टर्टल महाराज है वो आ जाएँगे। जय भाई। क्या लगता है किस तरफ यहाँ पे जो पोटेंशियल है देखने को मिल सकता है लेकिन टॉप लेन पे पोक किया जा रहा है सीसी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे पोक किया गया है रिकॉल लेना पड़ेगा और उसके साथ टीम जो है वो आ चुकी है दोनों ही टीम जो सेटअप करेगी कछुए महाराज के लिए और यहाँ पे अपनी अपनी जो पोजीशन है वो सेटअप की जा रही है। जय भाई। जी बिल्कुल, यहाँ पे टर्टल पे हमें अच्छा सा फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हायाबुसा अपना अल्टीमेट जो है वो यूज करते हैं, यूज करके टर्टल पे रिट्रीब्यूशन मारते हैं, तो हायाबुसा के पास ज्यादा चांसेस रहेगा कि टर्टल लेने के, क्योंकि उनका अभी जो रिसेंट बाफ हुआ है लीइंग हायाबुसा इनके अल्टीमेट के जब अल्टीमेट स्टेट में रहते हैं तब भी वो जो है रिट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हायाबुसा का एडवांटेज है अगर प्रॉपर वो ले सके, लेकिन यहाँ पे जॉय को जो है थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा भाई। जी हाँ, बिल्कुल और देखिए जिस तरह से ज़ोनिंग करने की पर्याप्त यहाँ पे कोशिश की गई थी, बदांग ने वॉल लगाई लेकिन मौका नहीं मिलेगा। हायाबुसा जो है लेके गए टर्टल, चुरा ले गए रेट्रिब्यूशन का बहुत ही बेहतरीन जो इस्तेमाल किया गया और फर्स्ट ब्लड लेते हुए यहाँ पे जॉय का और पीछे इसकी तरफ जो है मुसीबत में पड़ते हुए जाएंगे। मृत्युदंड मिलेगा उनको, उसके साथ एक और मृत्युदंड और क्या ही बात कहूंगा मैं यहाँ पे 4 यहाँ पे जो 3 किल है वो यहाँ पे दे चुकी है टीम ब्लू को। ब्लू की टीम की जो यहाँ पे एक मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है। स्नो बॉलिंग यहाँ से अब जो है स्टार्ट होने लगी। बहुत ही महत्वपूर्ण एक टीम फाइट यहाँ पे लॉस्ट करती हुई बस्ट एंड बस्ट की तरफ से सॉरी जो बेस्ट और बस्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई यहाँ पे तो एक जो टाइटल गवाया उसके साथ साथ जो है 3 किल गवाए। ये बहुत ही मैं कहूंगा एक नुकसानदायक डिसीजन यहाँ पे इनके लिए रहेगा। जय भाई। जी बिल्कुल शिंदा भाई, जैसे कि मैंने कहा जोहेड तो लेना अच्छा बात है, लेकिन काउंटर किसको करेंगे इसका देखिएगा। कितना प्यारा सा जो बादाम कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे शायद बादाम को दिक्कत हो सकता है, उनको भागना पड़ेगा पीछे की तरफ, वरना बादाम के यहाँ पे लाशें हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ जो है हमें जुक्शन का कितना प्यारा सा जो सेकंड स्किल का यूज प्रयोग करते हुए देखने को मिल रहा है, जो है वो टीम को अच्छे से सीसी दे रहे हैं। इसी के साथ देखिएगा आप कि यहाँ पे जो है एमएम तक पहुंच गया था टर्टल लेन पे, जो आपका दो फीमेलिया है उनका टीम जो है पांचों के पांचों ऑलमोस्ट वहीं पे थे टर्टल हेल्प करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला। इसके साथ हाया का जो क्वार्टर फाइनल देखने को मिला, इसी के साथ जुशिन फ्लिकर मार के बच जाएंगे, और हायाबुसा जो कोशिश अच्छे किए थे, लेकिन फ्लिकर जो है ना हायाबुसा का वो लगता है, तो आप फ्लिकर यूज करते हो तो हायाबुसा का अल्टी कैंसिल हो जाता है। बहुत ही अच्छा डिसीजन था यहाँ पे जो है सिसिलियन का। जी हाँ, बिल्कुल और यहाँ पे देखिए चाओ यहाँ पे किक किया था उनको और उसके साथ जो सीसी बहुत ही इजीली निकल जाएगी
और दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पे जॉय जो है अभी फार्म ही करेंगे, उनको मौका भी मिला नहीं है। जॉय हेड जो है वो विजन प्रोवाइड कर रहे हैं, और नीचे अगर एमएम के लेन की बात करें तो वो फार्म ही कर रहे हैं, ज्यादा वो पूकबाजी नहीं कर रहे हैं, अपने अपने मिनियन ले रहे हैं, रिस्पेक्टली अपने अपने मिनियन मार रहे हैं और बैक लेन हो जा रहे हैं। और उसके बाद सिसिलियन, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण रोल है सिसिलियन वो जरूर निभाएंगे, जैसे जैसे लेट गेम जाएगा तो रेड टीम का जो है हल्का सा जो गेम है हमें सुधरने को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे एक और जो एक कछुआ महाराज हमारे आने वाले हैं, तो ये कछुआ महाराज कौन लेके जाएगा जय भाई, देखना चाहेंगे जरूर। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी अभी जो रेड टीम का पड़ला थोड़ा सा बारी से बादाम ने कितना प्यारा सा कील लेते हुए यहाँ पे जो रेड टीम का जो पड़ला थोड़ा सा बारी था, वो अभी उनको थोड़ा सा मुश्किल में पड़ते हुए देखने को मिलेगा। इसका जो हायाबुसा कोशिश करेंगे टाइटल लेने की, और शायद यहाँ पे हायाबुसा को, जी बिल्कुल हायाबुसा को टाइटल मिल गया। और यहाँ पे कोशिश करेंगे एक दो किल लिया जाए, लेकिन जो रेड टीम जो है समझदारी दिखाते हुए जो हमारे बेस्ट और बस्ट है वो पीछे की तरफ चले गए। इसके साथ इरिथेल देखिए कितना अच्छे से फार्म करे, और बादाम जो उनको पोक करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको ज्यादा फार्म मिल ना पाए। और देखिए कितना प्यारा सा जो क्लॉट का अल्टीमेट लगा इरिथेल को, शायद इरिथेल का यहाँ पे कोई लैग या कुछ इशू हो रहा है क्या पता नहीं चला, क्योंकि वो जो है टारगेट के अंदर ही डैमेज खाते हुए जो यहाँ पे उनकी लाशें देखने को मिला है हमें सिंडा भाई। जी हाँ बिल्कुल, शायद जो है थोड़ा सा लैग हो रहा होगा, और मेरे जो स्क्रीन है उसमें भी थोड़ा हल्का सा लैग हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मिड लेन पे जूशिन आती हुई और उसके साथ जो मिनियंस हैं वो खा रहे हैं, और बॉटम लेन पे शायद हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही अच्छी जोनिंग जो यहाँ पे बदांग कर रहे हैं, और उसके साथ टर्रेट है वो लिया जाएगा एमएम के द्वारा, और बहुत ही खूबसूरती से जो है वो टर्रेट जो है वो ले लिया गया है बॉटम का। और अभी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वो अभी स्ट्रगल कर रही है, 5-0 का स्कोर चल रहा है, और उसके साथ जो अगर हम फार्म डिफरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2K यहाँ पे जो है फार्म डिफरेंस हो चुका है। और यहाँ पे कोशिश की गई थी एक बहुत ही बेहतरीन फ्लिकर अल्ट का प्रयोग किया गया, जी गुंडू जो यहाँ पे चौ की तरफ से बदाम का अल्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और मैं कहूंगा जो कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही बेहतरीन, जॉय आए पीछे से बदाम को लिया जाएगा, मृत्यु दंड उन्हें दिया जाएगा और उसी के साथ पीछे हो जाएंगे। यूशिन बहुत ही यहाँ पे पोकिंग करने की कोशिश कर रही है, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे पोक किया गया। और जॉय ने मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन जाते जाते जो है, मतलब अगर आप का एक जा रहा है साथी तो आप जो है जरूर चाहेंगे कि एक जाते जाते जो है एक किल तो मिल ही जाए, और यहाँ पे दो के बदले एक किल बहुत ही अच्छा ट्रेड ऑफ मैं कहूंगा। और उसके अगर आइटम की बात करें, फार्म की बात करें, तो अभी बहुत ही ज्यादा जो है ऑलमोस्ट दो दो फार्म जो आइटम्स है वो आ चुके हैं। चाओगे देखेंगे तो थंडर बैग्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उसी के साथ जो एमएम उनके भी जो है बिल्ड बहुत ही अच्छी तरह से आ चुके हैं, और टॉप लेन पे शायद हमें गैंग देखने को मिल सकता है, चाओ रेडी है वो शायद जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे हल्का सा जो है जोन इन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मिनियन पीछे से आ जाएंगे, तो अभी जो ऊपर जो गैंग होना सफल नहीं रहेगा। और उसी के साथ मिड लेन पे आ चुके हैं बदांग भैया आए हैं, और यहाँ पे बुशिश काफी अच्छे से जो है चेक कर रहे हैं, विजन जो है काफी अच्छा दे रहे हैं बदांग भैया, हर एक चीज फूक फूक के जो चल रहे हैं। इनकी जो टीम है ना, ये इनका जो कंपोजिशन है वो हमें काफी अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है जय भाई। जी बिल्कुल शिंडा भाई, इसका देखिए जो कछुआ महाराज का तीसरा बार आगमन हो चुका है, इसके साथ जो है मुझे लग रहा है ब्लू टीम का पल्ला फिर से भारी है। यार इस बार भी ब्लू टीम को ही मिलेगा टाइटल, क्योंकि जो उनका हाइपर है जॉय वो कोशिश ही नहीं कर यार। इसके साथ जो है जॉय का सुंदर एक प्रदर्शन यहाँ पे, और यहाँ पे हमें अच्छा सा फाइट देखने को मिल रहा है। जो हायाबुसा उनको किलिंग स्प्री मिल चुका है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे हायाबुसा का जो गेम प्ले है हमें देखने को मिला है। जुशिन जो है पीछे से वो उनको जो है आपका जो सीसी है उनका प्रयोग करते हुए यहाँ पे शायद हमें एक और दो किल देखने को मिलेगा। हायाबुसा फिर से क्वाड शैडो का यूज करते हुए आगे की तरफ गए, यहाँ पे एक जो एरिथल को मिल गया भाई बादाम का किल। तो यहाँ पे टीम जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट का लाइफ जो है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, उनको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा शिंडा भाई। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टर्टल जो है वो ले लिया गया था अपनी जो बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं कहना चाहता हूँ जॉय का, क्योंकि वो लास्ट टर्टल था, वो लेना ज्यादा जरूरी था वहां पे, वो टर्टल लिया गया। और मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे खूबी, बहुत ही, और यहाँ पे इसी के साथ एक और किल लिया गया, बहुत ही बेहतरीन मैं कहना चाहता हूँ। कम बैक का जो तरीका है वो यहाँ पे होने वाला है, कम बैक जो है वो उनका होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे जय भाई इसके बारे में। जी बिल्कुल, अगर रिटेल फार्म होता है, सिसिलियन का डैमेज आता है, साथ में सीसी और जो जॉय है सपोर्ट देते, तो उनको एक कमबैक का मौका मिलेगा। भूलिए मत, टीम बेस्ट और बस जो है एक बहुत ही अच्छा है, प्रोफेशनल टीम है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा द फेमिलिया जो है उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, संभाल के खेलना है, और अच्छा खासा जो है गैप मेंटेन करना चाहिए गोल्ड के लिए, तभी जाकर उनके पास जो प्रॉपर जीतने का मौका मिलेगा। अभी अगर उनको लग रहा है कि जो 7-8 किल मिल गए उसकी वजह से उनको जीतने के चांसेस है, वो बिल्कुल ही गलत है। टीम बेस्ट और बस को बिल्कुल ही वो कम ना समझे, क्योंकि कभी भी वो कम कर सकते हैं, कभी भी मैच जो है झटके में निकाल के लेके जा सकते हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं बेस्ट ऑफ बस्ट। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए जिस तरफ जहाँ पे शायद जो है बॉटम लेन पे हमें थोड़ी सी जो है लड़ाई वगैरह देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की जो है पोग वगैरह देखने को मिल सकते हैं जय भाई।
और यहाँ पे बेहतरीन फाइट हमें देखने को मिली, बदांग ने वॉल लगाई है यहाँ पे, और पीछे से देखिए जूशिन डैमेज देने का कोशिश यहाँ पे करने की कोशिश की गई थी, परंतु पीछे हो जाएंगे जूशिन, समय पे जो है अपने पांव पीछे खींच लेंगे, और बदांग जो है पो करने की कोशिश की गए थे। और जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, सेकंड्स का प्रयोग किया तो है, शायद देखने की कोशिश करेंगे किसी को, लेकिन आए नहीं है किसी के सामने। और पीछे से देखिए जो अपने सिसिलियन है वो अभी भी फार्म हो रहे हैं, उनका जो है डैमेज थोड़ा सा अभी जो है लेट गेम में ही आएगा, जब 12 मिनट्स हो जाएंगे ऊपर तभी आ पाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे शायद जो है चाओ शायद फंसते हैं अकेले, कोशिश की गई थी, अल्ट का प्रयोग किया गया था, परंतु पीछे हो जाएंगे, बच जाएंगे क्या, बचने की कोशिश की गई थी, परंतु मारे जाएंगे। जॉय उल्टा इनको जो है मृत्यु दंड यहाँ पे दे चुके हैं, और इसी के साथ नहीं जाने देंगे जो हेड को भी, डबल किल यहाँ पे जूशिन उठाती हुई। लॉर्ड जो है वो जी भी जी हमारे आ बिल्कुल जी। चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे चो का जो इस तरह से प्रदर्शन था और जिस तरीके से वो बच के आया, साथ में जो सपोर्ट किया इतना लो हेल्थ में, हमारे चो ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था टीम द फैमिली की तरफ से। देखा आपने, चो का हेल्थ कम था, जैसे ही मौका मिला उन्होंने बादाम को जो है स्टन करके नॉकअप किया, नॉकअप करने के बाद फिर से पीछे आकर चले, क्योंकि उनका काम हो चुका था। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था। जो जो लॉर्ड शिव शंभू महाराज जो टीम द फैमिली को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, लेन पे प्रेशर बना रहेगा इसका। जो क्लॉड ने लेन क्लियर किया है, जो आपका गोल्ड लेन है, देखिए बॉट लेन बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर चुके हैं, तो लॉर्ड जो है हमारी अभी जाएंगे जो है बॉट लेन की गोल्ड लेन की तरफ से, तो वो लोगों को मौका मिलेगा टॉप और मिड लेन क्लियर करने का। इसका देखिए कितना अच्छा सा इनका फाइट। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पकड़ा गया था बादाम को, लेकिन मृत्यु दंड दिया जाएगा, किलिंग स्प्री यहाँ पे लिया गया रिथिल की तरफ से। और यहाँ पे मिड लेन का टरेट वो भी जा सकता है। उसी के साथ देखिए चाओ जाएंगे, पीछे पीछे होना पड़ेगा उनको। और उसी के साथ यहाँ पे मिनियन आ चुके हैं, मिड का टावर जाने का जो है वो पर्याप्त उसमें जो है समर्थ रहेंगे। जी हाँ, उसी के साथ यहाँ पे मिड का टरेट निकाल लिया गया है, एक गलती यहाँ पे वो भारी पड़ जाती है, आपको संभल के यहाँ पे चलना पड़ेगा। 2 किल गवाए थे यहाँ पे द फेमिलियर की टीम ने, और उसी के साथ उसका फायदा जो है यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट भरपूर उठाया, परंतु लॉर्ड अभी जो है वो गया है ब्लू टीम की साइड। और उस लॉर्ड को जो है, पहला ही लॉर्ड है तो जल्दी खत्म कर देंगे, बेस तक जाने ही नहीं देंगे। जय भाई। जी बिल्कुल शिंदे भाई, यहाँ पे जो हमें अच्छा सा फाइट देखने का मौका मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया फाइट है, लेकिन मैंने जैसे ही कहा संभाल के खेलना पड़ेगा। टीम बेस्ट और बस्ट ऐसे टीम है जो कभी भी कमबैक करने की जो है क्षमता रखते हैं। इसी का देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा फाइट देखने को मिला, हायबुसा ने कितना अच्छा अल्टी का प्रयोग किया, और साथ ही साथ जो जॉयट का यहाँ पे किल ले लेगा। इसी के साथ जो सीसी पे जो प्रॉपर अल्टी और जो जूशिन का जो स्किल प्रयोग हो रहा है, इसी के साथ चोर ने ले लिया जो जॉय का किल। कितना प्यारा सा हमें फाइट देखने को मिल रहा है शिंदे भाई। यहाँ बिल्कुल देखिए क्लॉड कार्ड का प्रयोग किया गया था, चाहो गए हैं नीचे मारने के लिए, परंतु एचपी बहुत ही कम है, और अपना जो किल है वो दे देंगे, मृत्यु दंड उनको दे दिया गया है रितिल की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पे कोशिश की गई थी, यहाँ पे उसके साथ असैसन अपने निंजा तोड़िया थे, शैडो किल्स का प्रयोग किया गया था, परंतु जो अपनी शैडो के थ्रू गए थे डैमेज दिया था, लेकिन वो डैमेज जो है वो पर्याप्त नहीं था। और अपने एमएम जो है पीछे आना चाहेंगे, एमएम जी आपकी हेल्थ बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा पीछे ही आ जाएं, लेकिन शायद उनका जो आइटम है, एक बार आइटम की तरफ भी नजर डालना चाहेंगे जय भाई, काफी टाइम हो गया है आइटम की तरफ अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे। जी हाँ, उनके पास जो है हेक्स क्लो है, तो अपना जो रीजन है वो इजिली कर लेंगे। और उसके साथ यहाँ पे देखिए जिस तरह से जो अपने जॉ हेड है वो गए थे एमएम के पीछे, परंतु एमएम ने अल्ट चला दी है, और उसके साथ जो डैमेज है वो दिया गया था जॉ हेड को। और आइटम की बात कर ही रहे थे हम लोग जय भाई, तो काफी ज्यादा जो आइटम है अभी बन ही चुके हैं सबके, ऑलमोस्ट जो है 3 3 से 4 4 आइटम बन चुके हैं। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए ये जो मौका है, जॉय अभी तक जो है चल नहीं पाई है इस गेम में, मैं कहूंगा एक अच्छा अल्ट और जॉय जो है इस गेम को जो है वो पलट सकते हैं। जय भाई। जी बिल्कुल शिंदे भाई, यहाँ पे जो जय को अगर मौका मिलता है और जो टीम को वाइप आउट करने की भी क्षमता रखते हैं, उनके पास उतना मोबिलिटी, यहाँ पे देखिए चो पोक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जानबूझ के खड़े हुए हैं ताकि वो जो है टीम उनके ऊपर गैंग करे, उनको एक मौका मिले। लेकिन मैं चो को बोलूंगा थोड़ा संभाल के खेलिए, क्योंकि आपका टीम अभी आपके साथ है नहीं। और रेड टीम जो अपने मिनियंस का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है मिलेट लेन क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो है द फैमिलियर टीम वो मौका नहीं दे रहे हैं उनको मिनियंस के लिए जो क्लीन क्लियर करने पे मजबूर करे, दोनों तरफ से जो एक प्रेशर बनाकर रख रहे हैं। इसी के साथ जो अभी लॉर्ड आएंगे हमारे शिव शंभू, अगर किसी भी टीम का 2 3 किल जाता है और साथ में लॉर्ड मिलता है दोनों टीम में से किसी को भी, तो हमें जो है एक विनिंग गेम देखने को मिल सकता है शिंद्रा भाई। जी हाँ बिल्कुल, अरे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा इनको, और अगर ढंग से नहीं खेलेंगे तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा जो मैं कहूंगा डिसएडवांटेज मिल सकता है उनको। उसी के साथ देखिए यहाँ पे लॉर्ड को जो है थोड़ा साइड लिया जा रहा है, टीम जो है जोनिंग कर रही है, और उसके साथ सीसी भी आ चुकी है, सीसी जो है हल्का सा पोक करेंगे चाव को। और यहाँ पे देखिए लॉर्ड का एचपी कम है, नीचे जाने की कोशिश करेंगे, सीसी का यहाँ अल्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन वॉल लगा के मारा गया, हायाबुसा ने उठाया है यहाँ पे लॉर्ड को, पीछे हो जाएंगे हायाबुसा। और उसी के साथ देखिए एचपी बहुत कम है यहाँ पे, पीछे हो जाएंगे, बहुत ही डिसिप्लिन गेम प्ले, दो जो है यहाँ पे अपने किल, मृत्यु उनको मिला है, लेकिन ट्रिपल यहाँ पे जो है ट्रिपल ट्रिपल किल
जा चुके हैं और इसी के साथ लॉर्ड जो है उनको ब्लू टीम को मिल चुका है, परंतु उसका जो खामियाजा है वो उनको भुगतना पड़ा और यहाँ पे इसका जो फायदा है वो जरूर उठाएंगे, लेकिन हायाबुसा का अल्ट मारेंगे सीधा एमएम को शट डाउन, सॉरी मेज को, यहाँ पे देंगे शट डाउन सिसिलियन जी को। लेकिन मिड कट्टर रेट अभी भी बचा हुआ है, मिड कट्टर निकालने की कोशिश करेंगे और नीचे से जो है लॉर्ड वो भी आ चुके हैं, एमएम जो है पूरा जो है डैमेज देने की कोशिश कर रही है, लॉर्ड को नहीं चाहती है कि ये जो लॉर्ड है वो आगे जा पाए। क्या भाई? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी टीम का दो तीन जो हीरोज है वो अगर डेथ हो जाते हैं किसी भी टीम से, उनको डिसएडवांटेज मिल सकता है और जो गेम शायद जीतने की भी मौका मिल सकता है, लेकिन गेम तो जीत नहीं पाएंगे। हायाबुसा का अच्छा स्किल का यूज सिसिलियन को जो यहाँ से गेम से निकालते हुए बाहर, तो यहाँ पे भी जो बहुत बढ़िया डिसीजन है। लेकिन टीम बेस्ट और बस जैसे कमबैक कर रहे हैं, जैसे इरिथल को फॉर्म मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि टीम द फैमिली को अभी जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो आइटम्स जो हैं वो पूरे आ चुके हैं उनके दरअसल, और जो स्किल्स हैं वो भी आ चुके हैं, लेवल अप हो चुके हैं, तो डैमेज जो है वो भी आ चुका है और इसके यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिल सकता है। जॉय जो है पीछे से इलेक्ट्रॉनिक बीट्स जो है वो उनका जो अल्ट का प्रयोग अभी नहीं किया गया, और उसी के साथ पे देखिए जिस तरह से मिड लेन पे शायद हमको जो है यहाँ पे दिख रहा है एम्बुश करने की कोशिश की जाएगी, पकड़े जाएंगे, क्या किसको पकड़ेंगे यहाँ पे वो भी हमें देखने को मिलेगा। लेन्स की बात करें, अभी जो लेन्स जो कंट्रोल है वो थोड़े ब्लू टीम की तरफ ज्यादा है, और जो अपनी रेड टीम है वो अभी थोड़े जो लेन क्लियरिंग में थोड़ा सा पीछे है। मैप कंट्रोल जो अभी बराबर ही है ऑलमोस्ट, और उसके साथ देखिए नीचे आइटम्स हम देखेंगे, जो चाव है अपने वो पूरे टैंक बिल्ड में ही गए हैं, और अगर नीचे की साइड देखे जाए तो एमएम का जो बिल्ड है वो भी ऑलमोस्ट आ चुका है, उनका जो पूरा है बिल्ड बन चुका है। दूसरी साइड दोनों ही एमएम के जो बिल्ड है वो काफी अच्छे बन चुके हैं। हायबुसा का भी जो है ऑलमोस्ट जो है तीसरा आइटम बन चुका है, चौथा आइटम बीओडी जाएंगे क्योंकि वो डैमेज जो है वो बीओडी से जरूर लेके आएंगे। यूशिंग का भी देखेंगे अगर हम लोग तो काफी अच्छा खासा जो यहाँ पे बिल्ड सबके बन ही चुके हैं। अब जो वेट कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं लॉर्ड, और उसके साथ जो क्लैश होगा वहां पे वेट करा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लू टीम मूव करती हुई शायद यहाँ पे पकड़ना चाहेंगी, बुश में जहाँ पे कोशिश की गई थी लेकिन भाग जाएंगे, वलांग बॉल लगाएंगे, पकड़ने की कोशिश, क्या पकड़े जाएंगे, यहाँ पे चार बंदे आ चुके हैं और उसी के साथ वॉल लगा दी गई थी, परंतु ओवर एक्सटेंड करने की कोशिश में बलांग को मिलेगा मृत्यु दंड। यहाँ पे थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड किया जा रहा है और इसका जो है मौका उनको नहीं मिलना चाहिए। देखिए मॉन्स्टर किल लेते हुए बहुत ही अच्छा रिथिल का डैमेज आता हुआ, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले देखने को हमें मिल रहा है बेस्ट ऑफ बस की तरफ से, कम बैक होने के चांसेस ज्यादा हमें दिख रहे हैं। जहां पे आपने ओवर एक्सटेंड किया वहां पे आपने उनको चांस दे दिया, थोड़ा पीछे हटना था, थोड़े पैर अपने पीछे होने थे, थोड़े से पेशेंस रखने थे क्योंकि अब लॉर्ड जो है वो आने वाला है जय भाई। जी बिल्कुल। मैंने जो बोला टीम फैमिली अगर सोच रही थी फैमिली कि वो लोग को एडवांटेज मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि उनको थोड़ा सेफ खेलना है, क्योंकि अभी हायाबुसा भी नहीं है, तो ये जो है आपका ये जो बेस्ट और बेस्ट को लॉर्ड इजीली मिल सकता है। कोई दिक्कत नहीं होना, क्योंकि कोई इनिशिएट कर नहीं सकती क्योंकि उनके पास हाइपर नहीं है। जो एक अच्छा सा मौका था उन्होंने गवा दिया। चो को थोड़ा सा सेफ खेलना था, उनका इतना एग्रेसिव नहीं खेलना था, क्योंकि विदल के पास ऑलरेडी फ्लिकर था। इसी के साथ एक तरफा लॉर्ड लिया जाएगा टीम बेस्ट ऑफ बस्ट की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल एक तरफा है लॉर्ड, और उसके साथ देखिए मिनियंस और रिवर कंट्रोल है वो, रिवर कंट्रोल के साथ साथ जो है अपने मिनियंस कंट्रोल है वो भी आ चुके हैं, लेन कंट्रोल आ चुके हैं, और जिस तरह से गेम का रुख अभी पलट चुका है वो जा चुका है बेस्ट ऑफ बस की तरफ, गेम का झुकाव उस तरफ आ चुका है, और हमारे मिड लेन से आ चुके हैं लॉर्ड शिव शंभू, वो भी क्रोधित रूप में, ये इनका जो है रौद्र रूप है। इसमें जो है थोड़ा डैमेज ज्यादा करेंगे अपने शिव शंभू जी, क्या इसको ये डिफेंड कर पाएंगे, क्या लगता है जय भाई, क्या इनके पास लेन क्लियर एबिलिटी है? और यहाँ पे लॉर्ड जो है वो बढ़ता हुआ मिड लेन से गए हैं, लॉर्ड जो है मिड लेन पे जो टर्रेट है वो इन्वेटर टर्रेट जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे, लॉर्ड जो है मेल्ट हो चुका है, काफी बेहतरीन यहाँ पे डैमेज हमें देखने को मिला है। और लेकिन ये कोशिश करेंगे जो है मिड जो टर्रेट्स है बाकी के जो लेन है वो जरूर ले जाने की कोशिश करेंगे, और वो कामयाब भी हो चुके हैं। सीसी देखिए जिस तरह से टर्रेट जो ले भी गई है, सीसीलियन का अच्छा खासा डैमेज आता हुआ एक ही बारी में ले गए हैं, 40% एचपी बचा है, और मिड लेन से आते हुए थोड़ा सा जो है गलती यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बदांग का प्रयोग किया गया, परंतु पीछे से जॉय आए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बीट के साथ गए थे अंदर, ज्यादा ही अंदर चले गए और उसका जो है भुगताजा जो है उनको भरना पड़ा, और अपना मृत्यु है वो दंड देना पड़ा। चौव आए थे, फ्लिकर का प्रयोग करेंगे, किक दिया है, क्या ले पाएंगे, के लिए एक एसपी बचे हैं, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अपनी जो एमएम है वो बहुत इरिथिल जो है वो मूव करते हुए मार देती है, लेकिन यहाँ पे शैडो किल का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नहीं, सिसिलियन जो है मौका नहीं देंगे, और इसी के साथ जो है बेस ओपन है, नहीं बचा पाएंगे। ये जो गेम है यहाँ पे एंड होने की पूरी क्षमता रखता है और वो कर भी देंगे। जैसा कि आप कह रहे थे कि बेस्ट ऑफ अस को हल्के में मत लीजिए जय भाई, आपकी बात जो है यहाँ पे सच होती हुई, इनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिला है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको जरूर रखना पड़ेगा इनके साथ। बेस्ट ऑफ सीरीज का गेम है, ये है गेम नंबर 1। तो जय भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
जी, बिल्कुल शिंडा भाई, मैं स्टार्टिंग से जैसे कह रहा था, टीम बेस्ट वेस्ट को आप कम मत समझिए, वो बहुत ही अच्छे खासे वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में आते हैं। वो लोग जेएमआरओ में भी शायद अभी फाइनल्स में भी खेलने वाले हैं, इतने कैपेसिटी वाले टीम है जो एबीएम के साथ, एबीएम हो गया, आईजीएन हो गया, उनके साथ। तो इसी कहना था कि भाई आप लोग अगर सेफ खेलते तो अच्छा खेलते, आपका इनिशिएट अच्छा था, अर्ली गेम बहुत अच्छा था, लेकिन चो का जो इनिशिएशन था, चो टैंक बिल्ड पे जाके एमएम को मारने की कोशिश करते थे, जबकि एमएम के पास ऑलरेडी हस्कलो था, जो रीजन था उनका प्रॉपर आ जाता। तो मुझे ये नहीं लगता कि चो का इनिशिएट दो बार मुझे लगा कि गलत हुआ। एक तो होगा टॉप लेन पे, जब टोनी इरिथल को कोशिश की, इरिथल ने फ्लिकर किया। फिर अभी एंड गेम में जो है इरिथल को मारने की कोशिश की, उसके जगह अगर बचे रहते तो शायद कुछ मौका मिलता, क्योंकि चो का टैंक बिल्ड तो डैमेज सोक कर पाते। तो इस गेम में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस जो एक्सपीरियंस का जो एडवांटेज टीम बेस्ट ऑफ बस्ट की तरफ से था, उन्होंने पूरा फायदा उठाया मौके का, उनको एक अच्छा खासा विन मिला। जो जो ऑलमोस्ट हार्ड, शायद अगर आज वो सेफ खेलते फीमेलिया, तो शायद हमें कुछ और देखने को भी मिल सकता था। यहाँ पे बादांग में कुछ खास चले नहीं, शिंडा भाई। जी हाँ, उन्होंने इनिशिएशन अच्छे किए थे, उन्होंने जो है सेट जो है वो अच्छे बनाए थे, परंतु वो ज़्यादा चल नहीं पाया एक गलती के कारण। जैसे कि आपने कहा कि टॉप लेन पे वहाँ पे थोड़ा-सा जो है ओवर एक्सटेंड किया गया फाइट को। तो जहाँ ओवर एक्सटेंड करते हैं वहाँ पे जो है आपको उसका जो एक बोलते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस वो देखने को मिलता है। उसका जो एक तरीके से कहूँगा रिएक्शन है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो देखने को मिला। वहाँ पे अगर ओवर एक्सटेंड नहीं करते तो शायद गेम प्ले जो है वो थोड़ा अलग हो सकता था। और लास्ट में जो है एमएम भैया वो थोड़ा साइड लेन क्लियर करते, जो अपना बेस है वो भूल ही गए। अगर वहां पे वो रहते अपना का प्रयोग कर देते, मिनियन क्लियर कर देते, तो शायद जो गेम है थोड़ा अलग हो सकता था। लेकिन कहना चाहूंगा पहला गेम है बहुत ही बेहतरीन। दूसरे गेम की तरफ हम जरूर जाएंगे, तब तक के लिए हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हम कुछ ही देर में लौटेंगे गाइस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने चिप्स जो है वो ले आइए, अपने जो ड्रिंक्स हैं आपको वो ले आइए, आपको जो पीना है कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीना है वो ले आइए। तब तक हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, Yeah, let's go. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. it's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone.
yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. तो देवियों सज्जनों आ चुके हैं हम नेक्स्ट राउंड में। अगर ये राउंड हमारी जो बेस्ट ओवर जीत जाएगी तो वो बन जाएगी, वो चली जाएगी नेक्स्ट राउंड में, वो बन जाएगी इस गेम की विजेता। और उसी के साथ यहाँ पे एक लास्ट मौका रहेगा यहाँ पे, जो उनकी दूसरी टीम है और जो अपनी द फेमिलियर है उनके पास एक मौका रहेगा यहाँ पे वापसी करने का। तो जय भाई इसका ये फायदा यहाँ पे उठाना चाहेगी कि नहीं, क्योंकि पिछला गेम हमने देखा काफी अच्छा जा रही थी द फेमिलियर, अर्ली गेम से जो है वो जो है डोमिनेट कर रही थी, परंतु ओवर एक्सटेंड एक फाइट वहां पे टॉप पे की गई। उसके साथ बॉटम लेन पे जो है मैंने देखा चाओ की तरफ से एक गलती और उसका खामियाजा उनको अपनी जो है हार से भरना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे जय भाई इसके बारे में? जी बिल्कुल, यहाँ पे चाव का एक नहीं, मैं बोलूंगा दो तीन जगह पे जो है चाव का थोड़ा सा जो है मिसकम्युनिकेशन हुआ टीम के साथ में, जो है सिनर्जी बन नहीं पाया। चाव एग्रेसिवली खेल रहे थे जबकि वो टैंक बिल्ड पे थे। उनको ये याद रखना चाहिए था कि टैंक बिल्ड पे आप किसी को मार नहीं सकते, आप अपने टीम को सिर्फ सपोर्ट दे सकते हो। तो जैसे इरिथल फ्लिकर मार के भाग गया, फिर लेट गेम में इरिथल के पास हस्कलो था, वो डैमेज जो है आपका ब्लू रेड बफ को मार के अपना लाइफ स्टील ले रहे थे, जो उनको मार नहीं पाए। तो वही मैं बोलना चाहूंगा कि और उसके बाद जो आपका रोज गोल्ड मेट्रो का जो फर्स्ट आइटम होता है जो शील्ड देता है वो भी थे। तो आप चो को थोड़ा सा देखना चाहिए था, संभाल के खिलाना था, क्योंकि ये गेम उनके फेवर में था। इसके बाद जो बैन और पिक देखने को मिल रहा है सेम एज जो है सूर्यू बैन हो गया या फिर हारिस बैन हो गया, शायद अभी हमें सेलेना बैन देखने को मिल सकता है, फेनी बैन देखने को मिल सकता है। तो सेम बैन ऑलमोस्ट होने वाला है दोनों टीम की तरफ से, मुझे लग रहा है। बस पिक क्या होगा मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है अभी राइट नाउ। जी बिल्कुल, यहाँ पे सेकंड बैन यहाँ पे सलीना बोलते ही है जो बैन हो जाता है। मैं कहता हूँ जय भाई आप बाबा क्यों नहीं बन जाते, आप कास्टिंग में क्यों आ गए हैं? आपको बाबा बन जाना चाहिए, जिस तरह से प्रिडिक्शन आप निकालते हैं तो वहां पे जो है वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ जो हमारे देखिए यहाँ पे सेलिना, मोबिलिटी की रानी, जी जी सेलिना बिल्कुल यहाँ फैनी। पे हमारी, जी 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 बिल्कुल, देखिए फैनी जी जो ये मोबिलिटी वाली हीरो है भैया, ये आती है केवल लगाती है इन और आउट, बहुत ही अच्छा इनका गेम प्ले रहता है। तो उस तरह से यहाँ पे जो इनको बैन कर दिया गया बैटलफील्ड पे, केवल लगाने का मौका नहीं मिलेगा इनको। जी जी शिंदा भाई, इसलिए मैंने ये बोला आपको कि इस मैच में बैन तो पता ही है ऑलमोस्ट, वही एसएसएन एमएम जो है मेलिसा, ये सब बैन हो सकती है। तो ये सब छोड़ के देखिए मेलिसा बैन हो गया तो मैं वही बोल रहा था, ये बैन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे ऑलमोस्ट पता है ऑलमोस्ट क्या क्या हो सकता है बैन। मुझे अभी इंटरेस्ट है उनकी पिक देखने में बस शिंदा भाई। जी, जी, बिल्कुल, हमारे जय बाबा की जय हो। चैट पे लिख दीजिए गाइस जय बाबा की जय हो। और इसी के साथ यहाँ पे जो है एक लास्ट बैन हमें देखने को मिलेगा, क्या बैन हो सकता है यहाँ पे? और यहाँ पे कर दिया गया हमारे उड़न खटोला। जी हाँ, इनको बैन कर दिया गया है। मटिल्डा जी को यहाँ पे जो है बैन किया गया है। इनको मैं उड़न खटोला ही बोलता हूँ क्योंकि अपने साथ-साथ ये उड़ा के ले जाती हैं अपने जो टीममेट्स हैं उनको भी। तो जय भाई यहाँ पे फर्स्ट पिक दोबारा से जूशिन देखने को मिल रहा है हमको। जी बिल्कुल शिंदा भाई, फर्स्ट पिक जुशिन होगा, फिर बादाम पिक करेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें शायद बादाम के बाद हमें जो है यहाँ पे अल्फा या लुकास देखने को मिल सकता है, या तो हमें फिर एमएम जो है प्रॉपर एक अच्छा एमएम ग्रेंजर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार ग्रेंजर अभी भी ओपन है। और टैंक में हमें हाइलोस देखने को मिल सकता है, साथ में क्या पता गाटो भी देखने को मिले इस बार। जी हाँ, जैसे आपने कहा गातो गाचा वो भी वो एक बहुत अच्छा हीरो है। क्या हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे विमर्श करते हुए उठा लिया गया सिसिलियन जी को दोबारा से। यहाँ पे जो है लेट गेम अपना जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं बेस्ट ऑफ बस्ट की टीम की तरफ से। और यहाँ पे उसका जो जवाबी हमला में जॉय यहाँ पे देखने को मिली है इस बार दूसरी टीम से, द फेमिलियर की टीम से। और उसी के साथ यहाँ पे दूसरा जो पिक है वो क्या देखने को हमें मिल सकता है जय भाई, अपनी दिल दृष्टि डालिए। या तो यहाँ पे बादाम पीक हो सकता है, यहाँ पे आपको जो है जुशिन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों ओपन हीरो है अभी राइट नाउ। और ग्रेंजर भी देखने को मिल सकती है, ग्रेंजर भी अभी ओपन हीरो है। तो शायद यार, लेकिन यार ये जो टीम द फैमिली है थोड़ा अलग पिक करते हैं, क्या पता वो लोग एक्सपीरियंस भी उठा ले। जी बिल्कुल, एक्सपी लेन पे तो शायद मेरे को लगता है बादाम दोबारा से यहाँ पे जो है रोमी ही जाएंगे। और कुछ भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल पिक है यहाँ पे बादाम का, किसी भी लेन पे जा सकते हैं। और उसका जवाबी हमला यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, दो पिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या ही पिक हो सकते हैं यहाँ पे? सिलेक्टिंग हीरोज आता है यहाँ पे, थोड़ा सा विमर्श किया जाएगा टीम के साथ, सोची समझी जाएगी क्या क्या उठा सकते हैं। जूलियन अभी भी ओपन है और उसी के साथ जो है
जूलियन के साथ-साथ यहाँ पे बाकी हीरोज़ भी बहुत सारे ओपन हैं। आपका आयलाज़ ओपन है, आपका आपका जो है यहाँ पे बहुत सारे हीरोज़ रहते हैं अभी भी। मेज भी सॉरी मेज तो हमारा जो है पिक हो चुका है। एमएम भी यहाँ पे ओपन है। शायद यहाँ पे किस तरफ जाना चाहती है टीम देखने को मिलेगा। शायद एक्सपी लेन पे यहाँ पे सीसी और असैसिन पे हमारे हायाबुसा। निंजा हथौड़ी अपने आ चुके हैं जंगलों के पार, पहाड़ों से ऊपर डिंग-डिंग करके आएँगे और डिंग-डिंग करके किल्स जो है वो लेके जाएँगे। जी बिल्कुल शिंदा भाई, इस बार जो है पिक थोड़ा सा उल्टा उल्टा देखने को मिल रहा है। पिक तो ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, लेकिन जो ले रहे हैं वो अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे अभी बेस्ट हुँ। बस ने हायाबुसा को उठा लिया है। इधर जो है जी। बादांग उनको, जो बादांग पहले पिक था, फिर सीसी को उठा लिया गया है, फिर सिसिलियन को उठा लिया गया है। पिक तो अच्छे दोनों टीम के भाई। पिक भी दोनों टीम के कोई कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छे अच्छे पिक है। मेटा पिक है, डैमेज हीरो पिक है, मोबिलिटी पिक है। तो अभी जो है हुँ। यहाँ पे ये देखना है द फेमिलिया क्या काउंटर लेंगे हाया के अगेंस्ट में। उनके पास अभी मेज ऑप्शन ओपन है। और साथ ही जो यहाँ पे हमें नीरज चोपड़ा देखने को मिलेगा, सर आपका नीरज चोपड़ा भाले वाले भैया। जी हाँ, नीरज चोपड़ा हमारे जो बाले वाले भैया इनका जो भाला है तबाही का भाला, वो है उनका जो मारते हैं और बैटलफ़ील्ड पे आ जाते हैं, कहीं भी जो है कहीं से भी टपक जाते हैं अगर भाला कनेक्ट होता है तो। और ये बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा एक मार्क्समैन है, जो मतलब ना टीम फाइट पे तो ना रहते हुए भी टीम फाइट पे रहते हैं। और यहाँ पे जो है बैन करेंगे ग्रेंजर को, नहीं चाहते अर्ली गेम पे पोक मिले ग्रेंजर की तरफ से उनकी लेन पे और उनको जो है बैन कर दिया गया है वहाँ पे। जैसा कि आप कह रहे थे जय भाई कि अपने जो यहाँ पे क्या ही काउंटर देखने को मिल सकता है हाया का। लेकिन यहाँ पे अभी जो है देखिए ये ग्रैंजर को बैन कर दिया गया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि मॉस्को के सामने कि आए ग्रैंजर क्योंकि ग्रैंजर आएँगे थोड़ी-सी दिक्कत ज़रूर देंगे लेकिन उसके बाद ज़ूशिन जो है उनको भी बैन कर दिया गया है क्योंकि मेज पिक अभी भी रहता है। जो अपनी द फलमीरा टीम है वहाँ से और उसको जो है यहाँ पे कार्मिला बैन करने को देखने को हमें मिला है। नया मैं एक कहना चाहता हूँ बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा एक बैन क्योंकि अगर कार्मिला जी यहाँ पे आ जाएँ, तो बहुत ही अच्छा हो जाता टीम जो है बेस्ट टू बेस्ट के लिए और वो शायद नहीं देखना चाहते हैं किसी अपने कपल वाले जो है निब्बा-निब्बी उनको नहीं देखना चाहते उनकी बीवी को जो सिसिलियन की जो बीवी है उनको जो है बैन कर दिया गया है। जय भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, यहाँ पे शायद हमें एक टैंक बिल्ड भी बैन भी शायद देखने को मिले, क्योंकि टैंक में अभी भी हाइलोस और गाटो ओपन है, जो बहुत ही अच्छा खासा इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर बादाम डोमिंग पे जा रहे हैं तो देखने को नहीं, और जो टीम है बेस्ट ऑफ बस्ट, वो सोचते हैं कि भाई जो है कि हाइलोस बैन कर दे तो बढ़िया रहेगा, या हाइलोस पिक कर ले क्योंकि इनिशिएट बहुत अच्छा मिल जाएगा उनको। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो अभी भी हाइपर पिक हुए नहीं, इसीलिए तो हमें वेक्सना बैन देखने को मिला है श्रीनगर भाई। ये तो कुछ अलग ही देखने को मिला है इस बार। ये नहीं चाहते ना कि आप जो है अपने देखिए चार्ज करने वाले हीरोज़ हैं और वक्साना जो है उनका जो फर्स्ट स्किल है, वो हंटिंग जो क्लॉ है वो जो है थोड़ा-सा जो है दिक्कत देता है, जो चार्ज करने वाले एनिमीज़ उनको सीसी देके, तो वो नहीं चाहते कि सामने की तरफ से यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हायाबुसा को एक तरीके से वो जो उनको जो है दिक्कत दे सकता है या सीसी है उनको भी दिक्कत दे सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे फोबियस की तरफ जो हवर किया जा रहा है, शायद फोबियस को उठाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जय भाई इसके बारे में? अगर फोबियस को उठाते हैं किस तरह का पिक रहेगा ये यहाँ पे? क्या ये यहाँ पे काम आएगा या फिर इसकी जगह जो एक अच्छा जो हीरो है वो आप पिक कर सकते हैं? फोबियस का पिक सही भी रहेगा। फोबियस एक सेमी टैंक हीरो की तरह बोल सकते हो, वो अच्छा खासा जो सस्टेन कर सकता है डैमेज। एटलीस्ट आप चो के साथ कंपेयर करो इसका, जो कि यहाँ पे हाइलोस का हमें पिक देखने को मिल रहा है। जो मैंने बोला था, यहाँ पे हाइलोस जो है बहुत अच्छा इनिशिएटर रहेगा, और इसी तरह जो हाइलोस को पिक कर लिया गया है कि वो बैन हुए नहीं थे, हाइलोस बैन लिस्ट में नहीं थे, तो बादांग जाएंगे एक्सपी पे। जैसे मैं पहले बोला था कि यहाँ पे हमें एक्सपीरियन हीरो देखने को मिलेगा, तो बादांग को एक्सपी, हाइलोस जाएंगे यहाँ पे रोमिंग पे, क्योंकि उन्होंने जो है वापस स्पेल लिया है, हीलिंग स्पेल जो है वो लिया गया है। तो इसी के साथ जो हुँ। अभी हमें अच्छा खासा दो पिक देखने को मिलने वाला है, जो टीम बेस्ट और वर्स्ट की तरफ से। एक हो गया गातो, और दूसरा पिक एमएम में केडी देखने को मिल रहा है, जो अच्छा खासा डैमेज देंगे आइलस को, और जो है डैमेज केडी का बहुत ही डेंजरस होने वाला है। मैं कहना चाहूंगा केडी पिक बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन मॉस्कोप का जो स्किल है, जो मिनियंस के थ्रू उसका पास स्किल स्किल जो पास होता है, तो उनमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है केडी को। इरिटेल पिक बहुत ही शानदार पिक होने वाला है बेस्ट ऑफ बस्ट की तरफ से, जो लेट गेम डैमेज हमें पिछले मैच को देखने को मिला है। जी, बिल्कुल, एरेथिल जो है वो पिक ज़रूर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरह से क्या वो दोबारा जाना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल दोबारा जाना चाहेंगे अपनी भेड़िए के ऊपर बैठ के। एरेथिल उठा लिया गया है और इसी के साथ देखेंगे हम लोग किस तरह का गेम प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लास्ट चांस रहेगा द फ़ेमिलियर की तरफ से अगर ये गेम नहीं जीती तो भैया हमारी जो बेस्ट ऑफ विन है वो डिफ़ॉल्टली जीत जाएगी क्योंकि 2 विन्स हो चुके हैं, बेस्ट ऑफ 3 का मैच है। उसमें से अगर 2 गेम जीत जाएँगे जो टीम वो तो जो है ऑलरेडी मतलब खत्म ही हो जाएगा फिर तो गेम की बात। और रही बात दूसरी तरफ जय भाई, लास्ट पिक हमें देखने को मिल सकता है एक बेहतरीन मेज, कोई एक ऐसा मेज जो जो मतलब बहुत ही पीछे से जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है डैमेज दे पाए। मैं कहना चाहता हूँ शायद लूओ लूओ भी एक बहुत ही बेहतरीन जो है पिक हो सकता है यहाँ पे।
क्योंकि आप देखिए अगर आएंगे उनके ऊपर उनको भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उठाया गया है लूकस को। तो मेज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है यहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं जय भाई इसके बारे में? इस बारे में क्या कहे, बस एक ही बात बता सकता हूँ कि जो हाइलोस यहाँ पे शायद मेज होके मिड लेन खेलने वाले हैं भाई, क्योंकि हाइलोस जो पीक हुआ है, हाइलोस का जो डैमेज होता है मैजिक में ही जाता है, लेकिन एज ए टैंक को कितना डैमेज दे पाएंगे, कितना सस्टेन कर पाएंगे, वही देखने की बात बनेगा। और इसी के साथ जो है टीम जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट को मौका मिल गया कि भाई आप फिजिकल आइटम्स जो है एक डिफेंस आइटम बना लो, तो आपको ये जी बहुत जी ज्यादा जी। सस्टेन मिल जाएगा इस गेम पे। मेरे को लगता है शायद जॉय जा रही है मिड लेन पे, क्योंकि देखिए उन्होंने जो है यहाँ पे अपना जो चेंज है वो भी वो कर लिया है, अपना जो रेट्रीब्यूशन है वो चेंज कर लिया है फ्लिकर पे। और रेट्री पे गए अपने लूकस जी, उनको हाइपर भेजा गया है। तो यहाँ पे एक थोड़ा फ्लेक्सिबल मैं कहूंगा पिक टाइप का जॉय हमको मिड लेन पे देखने को मिल रही है। सीसी इनफ है उनके पास, तो शायद वो चाहते हैं कि जो जॉय है वो मिड लेन पे खेल के जो है किल्स निकाले। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कहूंगा अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर आपका कंफर्ट पिक है तो आप जरूर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए मैटर्स ये करता है कि आप उस पिक में कितने बेहतरीन, आप उस हीरो को किस तरह यूज करते हैं, क्योंकि आपसे बेटर कोई और नहीं जानता कि आपने उस हीरो से कितने मैचेस खेले हैं, वो आपको पता है। आपको पता है किस तरह से वो हीरो वर्क करता है, आप कितने ज्यादा कंफर्टेबल है वो वर्क करता है। और उसी के साथ हम लोग आ चुके हैं लैंड ऑफ डॉन में। दोनों ही अपनी टीम जाएगी खेतीबाड़ी की तरफ। तो जय भाई एक और नया पड़ाव यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लास्ट चांस रहेगा डी फीमेल के पास कमबैक करने का। क्या इस मैच में कमबैक देखने को हमें मिल सकता है? जी शायद मिल सकता है, लेकिन जो जॉय पीक हुआ है ना मिड के लिए, मिलेन के लिए, तो उनको थोड़ा सा टफ देखने को मिल सकता है, भले मोबिलिटी हो, लेकिन सिसिलियन जो है मिड रेंज हीरो है, दूर से वो लेन क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉय जो पीक हुआ है, मैं उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज और कुछ नहीं, बस कि देखता हूँ कि जॉय कैसे प्ले दिखाता है गेम प्ले, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे हीरो लेके आप कॉन्फिडेंट कितना हो, क्या स्किल आप ले सकते हो, क्या स्किल जो है आप डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे इसी के साथ देखिए जो लेन कंट्रोल है यहाँ पे, मिड लेन कंट्रोल अच्छे से जो है दोनों टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है। मॉस्को अपना लेन क्लियर करके जो है कोशिश करेंगे शायद कि जो है मिड लेन पे थोड़ा गैंग करे। इसी के साथ जो है बादाम और सीसी जो है नीचे थोड़ा बहुत पोक कर रहे हैं, तो एक दूसरे का पोकिंग देखने को मिल रहा है। जो फाइट होने वाला है भाई, जो है मुझे लग रहा है कि टर्टल जो आएगा तब कचो हमारे के टाइम पे हमें एक अच्छा खासा फाइट देखने को मिलेगा। फिलहाल शायद टीम जो फोकस करेंगे थोड़ा बहुत पोक करके जितना हो सके फार्म ले लिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए टॉप लेन पे जो है मॉस्को मिलियन जो अपने मिनियंस हैं वो क्लियर करके पीछे हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन डिसीजन, यहाँ पे ओवर एक्सटेंड करने का कोशिश नहीं किया जाएगा, पीछे हो जाएंगे हाइलो जो है वो विजन देते हुए और इसी के साथ गटों के सामने आते हुए। और यहाँ पे देखिए शायद हमें फाइट देखने को मिल सकती है। हाई भूसा आए थे, शैडो लगाया, शैडो का प्रयोग किया गया, परंतु पीछे अपने पांव खींच लेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए जिस तरह से आए हैं लूकास जी का देखिए डैमेज गए हैं अंदर। अल्ट का प्रयोग करेंगे, सीधा गए हैं अंदर, दिया है डैमेज देने की कोशिश। हायाबुसा भी वहीं पे मार्क करेंगे, अल्टी का प्रयोग करेंगे, शैडो किल, फर्स्ट ब्लड यहाँ पे निकाल लिया गया है बहुत ही बेहतरीन रिथिल की तरफ से। और इसी के साथ सेकंड ब्लड भी हमें देखने को मिल सकता है। आइलोस गवाएंगे एक और किल, जी हाँ बिल्कुल दे दिया है उन्होंने मृत्यु को गले लगाते हुए। एक गलत डिसीजन बहुत ही ज्यादा अर्ली कर लिया, पेशेंस थोड़ा रखना चाहिए था, ओवर एक्सटेंड कर दिया और उसका जो है फायदा वो लेती हुई बस्ट ऑफ बस्ट की टीम। जी बिल्कुल शिंडा भाई, क्योंकि ईथल का जो आपका सेकंड स्किल है वो क्या करता है, आपका डिफेंस रिड्यूस करता है, डिफेंस ब्रेक करता है। तो लुकास को थोड़ा सेफ खेलना चाहिए था। मैंने बोला था कि टर्टल के लेन पे अगर फाइट हो तो भी मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एडवांटेज ऑलरेडी है बेस्ट और बस्ट को मिल चुका है। मुझे लग रहा है शायद इस बार जो टर्टल है बेस्ट और बस्ट को मिल सकता है, क्योंकि जो उनके हाइपर है वो अभी भी ब्लू बफ में है। इसी का हमें प्यारा सा गैंग देखने को मिला है शिंडा भाई। यहाँ पे एक हायाबुसा का तरफ से प्यारा सा किल जो है हमें देखने को मिला है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हाइलोस जो है वो भी गए थे इनिशियली, लेकिन ले नहीं पाए। यहाँ पे आए थे लुकास आए, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसको मिलता है। इसी के साथ जो है हमको हायाबुसा की तरफ से भी बहुत ही सुंदर सा एक रिट्रीब्यूशन का प्रयोग देखने को मिला है, और जो हायाबुसा है जो टाइटल जो कचो हमारा उसको सिक्योर कर लिया है। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा फाइट देखने को मिला, लेकिन जो टीम जो है द फैमिली और जैसे एग्रेसिव खेलने की कोशिश करे, जो एक एक करके हीरो आ रहे हैं उनके, और जो फाइट करने की कोशिश करे जो चार ओपोनेंट के अगेंस्ट में, वो थोड़ा सा मैं बोलूंगा अभी सेव करके रख लो भाई, नहीं तो लेट गेम में आप बच नहीं सकते। जी बिल्कुल, थोड़ा सा सेफ खेलने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे टॉप लेन पे जो है लगे हुए हैं, मॉस्को जो है ऑलरेडी लगे हुए हैं, रिथिल जो है इजीली फार्म अप हो रही है। और यहाँ पे देखेंगे गटो का काफी अच्छा जो हमने एजी देखा अभी पिछले बार पे, बहुत ही बेहतरीन एजी का प्रयोग किया गया था वहां पे। और उसी के साथ स्टन करने का प्रयोग, मॉस्को थोड़ी दिक्कत में पड़ते हुए सेकंड्स का प्रयोग करेंगे, पीछे फेंका गया है यहाँ पे गटो का चक्को। उसी के साथ अपने मेज वो आए हैं, हल्का सा पकड़ने की कोशिश की गई थी सेंचुरी क्लॉ में, लेकिन नहीं पकड़े जाएंगे। और उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी जो है यहाँ पे विजन का जो है वो दिया जा रहा है। मेज जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, जॉय है ये अंदर पोक करने की कोशिश की गई थी, निकल जाएगी बहुत ही इजीली। और उसी के साथ में पकड़ने की कोशिश की गई थी गटो कचा।
आए थे, लेकिन शैडो किल्स का प्रयोग करते हुए अल्ट का प्रयोग करेंगे, क्या यहाँ पे किल निकाल पाएंगे? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन जो किल है यहाँ पे निकाल लिया गया है जॉय का। और जॉय जाएंगे सीधा मृत्यु दंड के द्वार, उनको भेज दिया गया है मृत्यु लोक, वो जाएंगे रिस्पॉन स्क्रीन पे, और वहां पे जाके थोड़ी देर में आएंगे, दोबारा रिस्पॉन जरूर होंगे। और टॉप लेन पे देखिए जिस तरह से जोनिंग की जा रही है, उनको मौका नहीं देना चाहते हैं टावर निकालने का, और दो बंदे ऑलरेडी वहां पे बुश पे छुपे हुए हैं, और विजन जो है प्रोवाइड किया गया है, परंतु नाकामयाब अभी हो जाएंगे वो लोग लेन रोकने में। और नीचे सीसी और बादाम दोनों का लगा हुआ है, लेकिन मिड लेन पे जॉय आई है, इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स का प्रयोग किया गया, लेकिन गटो सामने आ गए हैं, मौका नहीं देना चाहेंगे उनको। और उसके साथ हाइलॉस का एक काफी अच्छा एक अल्ट जो है यहाँ पे जॉय को सेव किया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएशन यहाँ पे हमें देखने को मिला। और इसी के साथ लूकस अभी जो है फार्म होना चाहेंगे, अननेसेसरी फाइट नहीं लेना चाहेंगे, गटो पोक करने की कोशिश की गई है। इरिथिल देखिए जिस तरह से उनका जो मूवमेंट स्पीड है, कितनी इजीली यहाँ पे जो है रोटेट कर रही है, और फार्म भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से खा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। उसी के साथ हमारे जो कछुआ महाराज है वो भी आ चुके हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेट देखने को हमें मिल सकता है, फाइट हमें देखने को मिल सकती है, क्या वो जाना चाहेंगे यहाँ पे? जी हाँ, अंदर तो गए थे, डैमेज देने की कोशिश, जॉय भी गई है अंदर, और उसके इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स का प्रयोग किया गया, परंतु बहुत ही लो एचपी एओजी का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे पकड़ा गया है हाइलॉस को, और मृत्यु दंड दे दिया गया है उसी के साथ। तो यहाँ पे कोशिश की गई थी, लेकिन लगातार यहाँ पे किल्स जो दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, बहुत ही लो एचपी है, पीछे होना पड़ेगा, लेकिन क्या बदांग बच पाएंगे? जी नहीं, मौका नहीं दिया गया, सिजिलियन की तरफ से किल लिया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। गेम बेस्ट ऑफ बस नहीं मौका देना चाहती है, टॉप लेन पे मॉस को लग चुके हैं टावर लेने में, वो ऑब्जेक्टिव पे जुट चुके हैं। और इसी के साथ में नीरज चोपड़ा भागना पड़ेगा उनको, पीछे पड़े हैं तीन बंदे, अगर नहीं भाग पाए तो बहुत दिक्कत होगा। और इसी के साथ शेडो किल लेके अपने जो हायबुसा है वो भी रेडी है, चाहते हैं उनको जो है शिकार करना उनका। क्या लगता है यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा? थोड़ा सा जो है बुश पे वेट किया जा रहा है, उनकी जो लोकेशन है वो देखने का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए सेकंड स्किल का प्रयोग किया गया, अल्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन पीछे से गटो बचाते हुए किलिंग स्प्री, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको जो है बेट किया गया मॉस्को को। मॉस्को जो है वो करना चाहते थे शिकार, परंतु खुद शिकार हो गए यहाँ पे। और उसी के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिला टावर टॉप का ले लिया गया बहुत ही इजिली। बिल्ड की बात करें जय भाई, कुछ कहना चाहेंगे इस बिल्ड के बारे में? जी बिल्कुल, बिल्ड तो अभी देखिए सीसी लाइन जो है उसका फर्स्ट बिल्ड हो चुका है, उसके बाद जो सीसी का भी बिल्ड हो चुका है, सब टीम का एक एक बिल्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो एडवांटेज है वो ज्यादा है आपके जो है बेस्ट और बस्ट। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा गैंग देखने को मिल रहा है, जो है भागने की कोशिश करेंगे, फ्लिकर का यूज, साथ साथ गाटो का एओजी लगते हुए कितना बढ़िया शानदार प्रदर्शन। इसके बाद जो है ईथल को मिलेगा एक और किलो, यहाँ पे हाइलोस भागने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे जो हमें यहाँ पे लुकस भाई फंसते हुए देखने को मिल रहे हो, जितना भी कोशिश कर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बच पाएंगे अगर प्रॉपर जो यहाँ पे फाइट होने को देखो मौका मिले। जी हाँ, बिल्कुल बच नहीं पाएंगे, एक एक एचपी बचे हैं, और उसका सिसिलियन का डैमेज देखिए बहुत ही कम एचपी बचे हैं, शायद हल्का सा बच जाएंगे। सेकंड स्किल का प्रयोग किया गया, और शील्ड आते ही सांस में सांस आई है बदांग के, उनको मौका नहीं दिया गया, तो बदांग को नीचे एमएम आ चुके हैं, रोटेट कर चुके हैं दूसरी लेन पे। वो जो है लास्ट जो टावर है वो पुश नहीं होना देना चाहते, लेकिन मिड लेन पे यहाँ पे जॉय बहुत ही कम एचपी पे बचती हुई जाना पड़ेगा पीछे। हायाबुसा गए थे मार्क लगाने की कोशिश, लेकिन अपने जो कुनाई नाइफ है वो लगे नहीं, पीछे आएंगे हायाबुसा। उसी के साथ टर्टल वो स्पॉन हो चुका है, टर्टल की तरफ आ चुके हैं, टर्टल लेने की कोशिश की जाएगी। और देखिए रेड बग वहां पे लूकस जी ले रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे थे जॉय इन्होंने पिक तो किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सीसी जो है वो दिक्कत दे रहा है, बादांग इतना अच्छा चल नहीं पा रहे इस समय, जिस तरह का हमने सोचा था कि इनिशिएशन देखने को मिलेगा वो अभी मिल नहीं पा रहा है जय भाई। जी बिल्कुल शिंडा भाई, देखिए पीक में ही मैच जो है ना थोड़ा सा डिसाइड डिसाइड हो गया था, क्योंकि आप देखिए ना पीक जो हुआ जॉय को अचानक से जंगल से उन्होंने मीट पे कर दिया। फिर जो अर्ली गेम पे लुकास का इनिशिएट दो दो बार हुआ, जिसमें उनको फाइट नहीं लेना था, उनको फार्म करना था, उनका फार्म होता थोड़ा सा डिफेंस बिल्ड होता तो बढ़िया मौका मिलता। लेकिन जो पहले भी गेम पे देखा, इस गेम पे भी देखा, वो लोग कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव खेलने की कोशिश करे, जबकि उनका बिल्ड प्रॉपर हुआ नहीं है। इसके बाद देखिए कितना अच्छा जो है गाटो जो उनको टीम को विजन देते हुए कि उनके चार चार जो एनिमी है बेस्ट जो हिद्दा फैमिली है उनको पूरा विजन प्रॉपर दे रहा है। अभी यहाँ पे हमें अच्छे से गैंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक गैंग की प्रिपरेशन किया जा रहा है शिंद्रा भाई। जी हाँ, बिल्कुल देखिए जिस तरह से जोनिंग की जा रही है, और उसके साथ जो टावर जा रहे हैं एक के बाद एक, वो बहुत ही दिक्कत देने वाला है। यहाँ पे बदांग ने का प्रयोग, सॉरी वॉल का प्रयोग किया गया, रोका गया था उनको, लेकिन टॉप लेन पे देखिए जिस तरह से टरेट्स किस तरह से जा रहे हैं, मिड लेन पे सॉरी माफी चाहूंगा, वहां पे जो है अभी लेके गए हैं टरेट्स, और इरिथिल लगी हुई अपने ऑब्जेक्टिव पे, वो मौका नहीं छोड़ेंगी, वो सारे टावर जो है वो मेल्ट कर देंगी, वो मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। और उसके साथ बेस्ट ऑफ बर्ड एक और जो है आगे बढ़ती हुई मेरे को दिख रही है, वो विक्ट्री नजर आती हुई, क्या वो इस विक्ट्री पे धूल झोंक पाएंगे? अपनी जो डी फैमिली है वो क्या है अपना
जो है जो एक तरीका है, जो टेबल है वो टर्न पर कर पाएगी, वो जो है एपिक कमबैक कर पाएगी या नहीं, वो देखना हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा जय भाई। जी बिल्कुल शिंडा वैसे का देखिए जो हायाबुसा ने कितना अच्छा प्रयोग किया, जो इनको हाइलोस को यहाँ पे जो बिल्कुल वो जो मतलब टर्रेट बचाने की कोशिश करे तो बचाने में सक्षम हो तो हो जाएंगे, लेकिन उनको बेस पे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो अभी टीम जो है बेस्ट और बस्ट कैसे चार ग्रुप होकर खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ से जो टावर पुश कर दिया है, तो वो आप ग्रुप होकर खेल सकते हैं। यहाँ पे जो मुश्किल की हालत हमें देखने को मिल रहा है टीम द फैमिली की तरफ से। यहाँ पे जो लुका से कोशिश करेंगे कि यहाँ पे शायद कुछ फाइट का मौका मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सक्षम हो पाएंगे। अभी अगर फाइट लेने गए तो उनको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा बचने का। यहाँ पे इसी के साथ देखिए जो लुकास है उनको विजिबल हो चुके हैं। यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी का भाला जो है लगते हुए टीम उसको बेस्ट और बास्ट को, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग इमोटी शो कर रहे हैं, जिसके जो है हायाबुसा अच्छा खासा जो है यहाँ पे शिव शंभू लॉर्ड महाराज को आराम से ले लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। लुकास कोशिश कर रहे हैं बफ लेने का। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा विजन दे रहा है, यहाँ पे कितना अच्छा जो शो ऑफ कर रहे हैं घाटो भाई। इसी के साथ जो लॉर्ड मिल चुके हैं हायाबुसा को, आप वो लोग करेंगे गैंग की कोशिश, ताकि वहां पे जो दो तीन हीरोज अगर उनका डेथ हो जाता है तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा बेस्ट और बास्ट को कि यहाँ पे गेम खत्म करने का। इसका जो हमारे नीरज चोपड़ा जी भाला का प्रयोग किया, इसका जो है भाई जो लुकास भाई का यहाँ पे हमें लास्ट देखने को मिलेगा रिटेल का किलिंग स्प्री। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, लुकास भाई जो है बहुत ही एग्रेसिव खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। और हमें देखिए कितना अच्छा गेम प्ले देखने को मिला है। यहाँ पे बिल्ड जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिटेल का जो फार्म है बहुत ही अच्छा खासा सबसे टॉप फार्म में चल रहा है, हायाबुसा का उसके नीचे है। इसका जो हमारे जो यहाँ पे द फेमिलियर टीम, उनका तो आइटम जो है अभी प्रॉपर बन नहीं पाया, अभी 5,000 के कगार पे फार्मिंग है, फार्मिंग कर नहीं पाया। वो जो है अभी जो गोल्ड डिफेंस 10,000 का चल रहा है, इसका शायद हमें गेम मैन होने का मौका देखने को मिल सकता है शिंडा भाई। जी हाँ, बिल्कुल नहीं चाहते हैं लेट गेम तक जाए, ये मौका एजी का प्रयोग करेंगे परंतु बचते हुए, लेकिन क्या ये बच पाएंगे? यहाँ पे नहीं नहीं बच पाएंगे। सिजिलियन पीछे से आएंगे, किल लेके जाएंगे, उसके बाद मेगा किल यहाँ पे आया भूसा का, और बेस पे लॉक इन करेगी रितिल, और अपनी विक्ट्री को भी लॉक इन करती हुई बेस्ट ऑफ बेस्ट आगे जाती हुई ले गई है अपनी विक्ट्री का ध्वज नेक्स्ट राउंड की तरफ जाती हुई। बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले मैं कहूंगा। थोड़ी सी जो है यहाँ पे पिकिंग की तरफ ड्राफ्ट पिक पे जो है थोड़ी सी गलती हमें जरूर देखने को मिली, और उसका खामियाजा हमें देखने को मिला इस गेम में। शायद पहले ही गेम में इनकी जो उम्मीदें थी वो तोड़ दी गई है। बहुत ही मैं कहना चाहता हूं बेस्ट ऑफ बस की तरफ से इनकी जो एक कहते हैं ना कि आस है वो तोड़ दी गई थी इस गेम प्ले में। और यहाँ पे हमें देखने को मिला जिस तरह का गेम प्ले, एक डिसीजन बहुत ही गलत डिसीजन यहाँ पे जॉय को जो है मिड लेन पे भेजने का, वो हमें देखने को मिला। और उसके साथ ही जो गेम है इतनी जल्दी यहाँ पे एंड हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। इरिथिल का डैमेज देखिए 68% टर्रेट डैमेज के साथ 28% जो है डैमेज दिया गया है इरिथिल की तरफ से। जय भाई। जय भाई अभी स्कोर देख के एकदम जीरो हो गए हैं, अभी जीरो टर्न इन की तरफ से देखने को हमें मिला, एक भी किल नहीं नहीं मिले हैं यहाँ यहाँ पे पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे कुछ बोलने के लिए मतलब क्या बताओ, कुछ बोलने के लिए है नहीं शब्द। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पीक हुआ तभी मैंने बोला जॉय को मिडलेन, जॉय चलो जॉय को जो मिडलेन दिया गया है चलो वो मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भाई आपका जो लुकास भाई है उन्होंने अर्ली गेम इतना जल्दी इनिशिएट क्यों किया, तीन लोगों के बीच में जाके जो दो दो बार वो मौत के घाट उतर चुके थे। मुझे वो समझ भी नहीं, क्योंकि लास्ट गेम में भी देखा आपने चो ने कैसे इनिशिएट किया, उसकी वजह से जो गेम प्ले जो है पूरा हारना पड़ा। तो मुझे लगता है टीम जो है द फेमिलिया को थोड़ा सा संभाल के खेलने की जरूरत है, इतना अर्ली गेम पे आप डैमेज मत दो, क्योंकि इरिथल का जो आपका सेकंड स्किल है वो डिफेंस रिड्यूस करता है, तो लुकास भाई को थोड़ा सा प्रिपरेशन करना जरूरी था। उसके बाद वो लोग कमबैक कर ही नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी जो किल्स पे किल्स मिल रहे थे। तो मॉस्को जो है हमारे मॉस्को भाई ने अच्छा खेला है, लेकिन क्या करे, क्योंकि टीम का जो प्रॉपर सपोर्ट मिल नहीं पाया। हाइलोस ने भी अच्छा करा कोशिश किया, और हमने देखा कि बादांग इस बार भी चल नहीं पाए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो हाँ बेस्ट और बिल्कुल। बस्ट है उनका जो गेमिंग गेम प्ले बहुत ही बढ़िया गेम प्ले था। इस बारे में बस इतना ही बोल सकता हूँ कि टीम दी फैमिली आप लोग थोड़ा सा सेफ खेलो, अच्छे से खेलो, आप अच्छा खेलते हो, आपका पीक और बैन बहुत अच्छा है, लेकिन इतना एग्रेसिव मत खेलो ताकि आपका और खुद की आपका डिसएडवांटेज बन जाए। जी बिल्कुल, यहाँ से जो है नोट जरूर लेके जाएंगे डी फिल्म में भाई। हो सकता है हम आगे के जो मैचेस है वो हमें देखने को मिले, और हो सकता है कि इससे भी अच्छे मैचेस है वो हमें और आगे जो है ये टीम जो है इम्प्रूव करते हुए देखने को मिले। लेकिन अभी के लिए जो है वो विक्ट्री ले जाएगी बेस्ट टू बेस्ट की तरफ से। और हम मिलेंगे आपसे एक और नए राउंड में। मैं हूं आपका कास्ट शिनरा, मेरे साथ है जय। तो जय भाई जाने से पहले कुछ समाप्ति में कुछ लाइनें कहना चाहेंगे? जी शिंदा भाई बिल्कुल, हम बस यही बोलना चाहेंगे कि बेस्ट और बस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आगे जाएंगे। आपने बहुत अच्छा गेम प्ले प्रदर्शन किया है, आपने जो दो मैच खेले उसमें बहुत काबिले तारीफ आपने गेम प्ले दिखाया। एक मैच में जो आपने कमबैक किया है मिड गेम से, काबिले तारीफ था। और टीम दी फैमिली आपको बोलना चाहूंगा आपका हीरो पिक सब कुछ सही है, बस आपको थोड़ा संभाल के खेलने की जरूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आप लोगों को टीम जो है आगे और भी टूर्नामेंट्स में आपको उभरता हुआ देखूं, किसी टीम में जो चैंपियन बनता हुआ देखूं, जिसमें हम भी कमेंट्री करेंगे, कास्टिंग करेंगे, और उस जोश से करेंगे कि एक टाइम पे टीम दी फैमिलिया जो था
उनको दिखाया था ऐसे गेम प्ले, आज हमें किसी अलग गेम प्ले देखने का मौका दिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा शिंडा भाई। जी बिल्कुल, और इसी के साथ जो है गाइस आप सभी से विदा लेना चाहेंगे आज के लिए। आज के हमारे मैचेस जो है सारे कंप्लीट हो चुके हैं और दर्शकों से भी मैं कहना चाहता हूं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का ये मैच देखने के लिए। अभी तक जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और इसी के साथ हम जाना चाहेंगे, सभी को शुभ रात्रि देना चाहेंगे। शुभ रात्रि आप सभी को। मिलते हैं हम एक नए राउंड में, एक नए दिन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me